Hello everyone, I'm Raza Hamid and I'm welcoming all of you to our toppers meet. Today we would be having different rank holders who would be coming and sharing their experiences. They would be coming and talking about their journey, the kind of problems they faced. Many could not clear the PT in the first attempt. Many gave their first mains after third attempt, after fourth attempt, gave their first interview and finally got selected. So let's listen to these toppers. Somebody would be talking about PT, somebody would talk about mains, somebody would talk about the failures, how to deal with failures, somebody would talk about in terms of current affairs. Everyone would be talking on different domains. We may have, let's say, multiple toppers who may speak on same domain also, and then you'll get the idea of how to solve one issue or how to look at one problem from different angles. So without wasting any time, I am presenting you different rank holders who have come together to celebrate their success. My name is Tanisha Jetli and I secured All India rank 400 in UPSC CSE 2022. So today I am going to talk about prelim stage because I feel कि इस stage में मेरे थोड़े better marks आए थे. In 2022 I scored 115 in prelims. So therefore I took this opportunity ताकि मैं prelims की strategy थोड़ी आप लोगों के साथ share कर सकूं. So जैसे कि we all know that every year prelims का pattern काफ़ी थोड़ा change हो रहा है and it is becoming bit difficult. So सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आई थिंक कुछ चीज़ें जो मैंने एनालाइज करी हैं एंड आई वांट टू शेयर. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड उसमें मेक श्योर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स वेरी वेल. और अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं सो यू शुड रिवाइज दोज बुक्स मल्टीपल टाइम्स. अपने बेसिक्स को मत छोड़िए. मेक श्योर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो. बेसिक बुक्स जो भी हैं, बी इट लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए. तो और दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स में आती है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. मैंने एक बुक रेफर करी थी जिसमें 27 ईयर्स के पेपर थे, प्रीवियस 27 ईयर्स के पेपर्स थे. तो उसमें सिर्फ पेपर सॉल्व करके अपना स्कोर नहीं देखना. हर एक क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, इंक्लूडिंग ऑप्शंस में कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है जो आपको नहीं पता कि ये क्या है, गो थ्रू दैट, उसको सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए. मेरे को फॉर एग्जांपल एक अभी भी चीज़ याद है. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी एक ऑप्शन में एनजीओ के बारे में पढ़ा था. सो आई गूगल दैट एनजीओ कि उसका क्या काम है एंड सेम क्वेश्चन 2022 में प्रीलिम्स में आया था कि ये एनजीओ जो है इससे रिलेटेड है. सो दिस इज हाउ यू शुड गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. थर्ड, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सीसैट को इग्नोर मत कीजिए. सीसैट इज बिकमिंग क्वाइट इम्पॉर्टेंट. क्वालिफाइंग है लेकिन आपको उसमें भी बहुत ध्यान देना है. आई यूज टू गिव 1.5 to 2 hours एवरी डे प्रीलिम्स के टाइम भी, और मैंने सीसैट के लिए भी मॉक टेस्ट दिए थे. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि उसकी भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, सीसैट की बुक्स भी हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सबकी स्ट्रैटेजी के अलावा एक चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये कि प्रीलिम्स वाले दिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए. बी रेडी टू फेस वट एवर विल कम इन योर वे. चाहे हो सकता है, और ये होता भी है प्रीलिम्स में, हर बारी हम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं. तो उस टाइम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि चाहे जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, आई विल आंसर इट. घबराइए मत उस टाइम पर. आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी कि मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को इस तरीके से करना है, जस्ट गो विद इट. उस टाइम पे अगर आप काम होकर पेपर अटेंड करेंगे, दोनों जीएस का भी और सीसैट का भी, तो डेफिनेटली आपके क्लियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे. क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है. मेरे साथ खुद सेकंड प्रीलिम्स में हुआ था कि मैं पेपर देखकर ही घबरा गई थी और इसलिए मेरा सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ था. तो ये चीज़ मत कीजिए. आपकी तैयारी अच्छे से है, अगर आपने बेसिक्स कवर करे हुए हैं, प्रीवियस ईयर करे हुए हैं, तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि उस दिन घबराइए मत, अच्छे से पेपर दीजिए. थैंक यू.
My name is Ambika Jain. I have secured All India rank 69 in UPSC CSE 2022. Last year I got into IPS and this year I'm going to get into IAS. So here I am going to tell you about the preparation that is required for CSAT exam. So we have seen that since past 5 years there's a trend of that people are failing to clear CSAT. So they are scoring better score in GS, yet they're not being able to score better in CSAT. So I personally, I had a humanities background in my graduation and as well as post graduation. So to me to CSAT was a challenge because there's a lost of touch in maths preparation. So uh, I'll just tell you that this was my third attempt, and in all three attempts I could clear CSAT. Uh, so I think the reason why I could clear CSAT was that I had a strategy on how to tackle this. So what I used to do, because I had the fear कि because मेरा तो maths background नहीं है, तो हमेशा वो डर रहता है ना आपके अंदर कि are you ready for it? So मैंने शुरू से ही जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, I would practice CSAT for half an hour, not more than half an hour, but I would start practicing. So मैं टॉपिक सेलेक्ट करती थी और मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि रीजनिंग इज स्टिल पार्ट वेयर रीजनिंग भी आप कर सकते हो, बट माई फोकस वॉज लार्जली ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सबसे पहले वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विथ सॉल्विंग अ प्रीवियस पेपर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वेयर यू एग्जैक्टली यू स्टैंड, कि क्योंकि आप चाहे तो कोई भी प्रीवियस से क्वेश्चन उठा सकते हो, फिर आप देखो कि आपका स्कोर कैसे आ रहा है. 2 घंटे में आप एकदम एग्जाम मोड में आप इस पेपर को दीजिए एंड देन यू सी हाउ यू आर स्कोरिंग. उसके बाद इफ़ यू थिंक देयर इज अ शॉर्टफॉल और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एरिया है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो. जैसे मैं बताऊँ, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कॉम्प्रहेंशन ही करने हैं या फिर आपको मैथ्स पार्ट ही करना है. जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ कॉम्प्रहेंशन किए थे, देन ऑल्सो आई कुड क्लियर. सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने मैथ्स किया था, देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू क्लियर. तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए, वीकनेसेस को जानिए, उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए. और हर दिन अगर आप एक टॉपिक चूज करोगे तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि व्हेन यू रीच एट द फाइनल स्टेज होता यह है कि यू फोकस मोर ऑन जीएस बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू फोकस मोर ऑन जीएस. तो उस में आप क्या कर देते हो, आप इसको डिले कर देते हो, इसको इग्नोर कर देते हो. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवरी डे. एक टॉपिक लीजिए और उसके एग्जाम्पल जितने वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स आप अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है. सो मेक श्योर यू डू दिस. इसके साथ साथ आप टेस्ट भी रेगुलरली दे सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में आप कैसे कर पा रहे हो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ साथ मैंने क्या किया था कि फाइनल डे पे, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त बचता है और जीएस के बाद शायद आपके पास कुछ टाइम गैप होता है जहाँ पे आप कुछ रिवाइज कर सकते हो, तो मैंने एक छोटी सी शीट बुकलेट टाइप बनाई थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो डिफरेंट एरिया से जो शायद आपको याद ना रहे, तो उन सारे फार्मूलाज को आप लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो. जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम से, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन से, इसमें फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. यू कैन रिवाइज दोज फार्मूलाज. अगर आप ये सब करोगे तो सीसैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू. साथ ही आप ये कि मैं बस यही बोलूँगी कि नेवर नेग्लेक्ट सीसैट पेपर, क्योंकि दैट वुड बी वेरी ट्रैजिक कि अगर आपका जीएस निकल रहा है और सीसैट नहीं निकल रहा है. जीएस में अगर आपके 120 119 आ रहे हैं और सीसैट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी सैड, राइट. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस, नेवर नेग्लेक्ट सीसैट. हर पेपर को इतना वेटेज दीजिए. और अटेम्प्ट्स की अगर बात करें, क्वेश्चंस 80 होते हैं. सो यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 80 क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज अ बिग फियर फैक्टर. तो आप कोशिश करिए कि आप सारे जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, आपके पास एक सर्टेनिटी रहती है. तो मैंने हर अटेम्प्ट में अपने तीनों अटेम्प्ट में मैंने 40 to 50 के बीच में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं. तो आई थिंक मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए, ताकि आप एक सेफ साइड पे रहो, ना कि बाउंड्री पे रहो. सो दिस इज लार्जली माई सीसैट स्ट्रैटेजी दैट आई हैड फॉलोड. So make sure you identify your strengths and accordingly prepare. और every day take small steps, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे you will realize that you are already ready for this paper. So that's it. All the best for your examination. Hello, good afternoon. I am Abhijit Sirohi. I have secured 215 rank this year, and I was also selected in CSE 2020 when I got 302 rank. I'll be talking to you. I'll try and give some of the tips which I have learned over the years about GS and GS means answer writing. I have written 4 means, and my GS score in the first attempt was around 380. Second was 401, third was 421, and this year it was 433.
So some of the things I've learned over the years is your content is obviously very important. How the amount of things you have learned, amount of things you have memorized, amount of data you have. But equally important, or I would say after a point, more important is how you're writing the answers, the structure of your answers, how well you are writing your introduction, how well you are dividing the question into how, what, when. Like if there is any question about any government policy, then the question arises that what are the issues with the current policy? What was the reason for the current policy? What is government doing about it right now? And what can be done? If you divide any question into these four forms, which is what is the cause of the current crisis? What are the issues arising due to that crisis? What can be done about that crisis, and what government is doing about the crisis, then I would say that you can solve a lot of questions. I can tell you from my first hand experience that almost all the questions except some geography questions, etc., can be done through this. Also, make sure that your introduction is crisp and has some data. It's to the point, because you have to make sure that uh, your the answer checker is interested in your copy. How do you make sure that your answer checker is interested in your copy? You make sure by giving your data, your facts in a very presentable manner. You make it as easy for him to check your copy as it's possible. You make sure that he doesn't have to apply too much mind. He doesn't have to read your answer thoroughly to get the points. So your point should be underline every important aspect. Use as much data, facts, figures, and diagram and maps as much as you can. Write a good conclusion so that he knows that you know the answer without going through every single line of your answer. And when I can see that my marks in means improved was when I started doing answer writing. I did not do much. I did 2 questions a day between prelims and means. And I can tell you, if you are doing 2 to 3 questions a day, that takes around half an hour, and then 20 minutes to check that copy. So if you're spending 45 to 50 minutes, that's more than enough. You would see your progress, you would see the mistakes you are making. If you yourself feel that maza nahi aa raha wo answer copy check karne mein in reading your answer, then you can be rest assured that the checker would feel the same, and he wouldn't even put in so much effort as you are doing. So your journey, your main motive is to make it as easy as possible. Your writing, your spacing between the words, your diagrams, as crystal clear, as to the point, as formal as it can be. So if you do all that, I can assure you that your marks in GS at least would definitely improve, because after a while content is same. Everyone is writing almost the same answer. But what you can do is you can give some of the brownie points in form of data, the report you have quoted somewhere, stats you have about recently some recent event which has happened. If you can do that, it's well and good. So that would be my advice. That is what I have learned. There's still much to learn for me as well. So if that works for you, I'll be really happy. And thank you so much for listening to me. Thank you. Hello, my name is Pratibha Meshram. I have secured All India rank 527 in the UPSC Civil Services Examination 2022, and this was my third attempt. In the first 2 attempts, I was not able to clear the prelims. Basically, in this attempt, I have scored quite good marks in GS and pretty average marks in optional, I would say. And in that also, GS2 is the one where I have scored the highest. So here I would talk about how did I prepare for the polity section of the GS paper 2. Basically with polities, काफ़ी चीज़ें you get covered in the newspaper. If the newspaper is regular, काफ़ी चीज़ें उसमें cover हो जाती हैं. The point here is कि न्यूज़पेपर से कैसे उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उठाना है, बिकॉज न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होती है दैट इज़ वेरी पॉलिटिकल एंड सारी चीज़ें उसमें काम की होती नहीं है. सो टू पिक अप दैट एंड टू लिंक दैट विद द स्टैटिक पार्ट, दैट इज़ एक्चुअली, क्योंकि आजकल पेपर डायनामिक होता जा रहा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो न्यूज़पेपर से आप उठा रहे हैं उसको आप स्टैटिक से कैसे लिंक कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द की टू स्कोरिंग आई थिंक मार्क्स इन एवरी ऑप्शनल. सो इन पॉलिटी व्हाट बेसिकली आई डिड इज स्टैंडर्ड बुक्स जो कंप्लीट करनी है. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज बेसिक, दैट यू शुड नो, बिकॉज सारे जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो मार्क्स फेच करते हैं आपको, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन अगर आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन करते हैं दैट इज़ व्हाट गेट्स यू +1 मार्क और 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा. सो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कवर करना है अच्छे से, ताकि उसमें आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें अच्छे से कवर करनी है कि आर्टिकल्स कवर हो जाएं. एंड देन आफ्टर दैट न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल इफ़ कुछ भी इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP और से इस सॉर्ट का कोई भी इशू है,
सो दी ओवरऑल न्यूज़ अगर है कि क्या इशू चल रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ कि वॉट आर दी क्लॉजेस, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है, कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन है, किस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन है. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, कि करंट आ रहा है बट करंट में से एक्सट्रैक्ट वही करना है जो यूजफुल है, और फिर उसको लिंक करना है अपने उसके साथ, आर्टिकल्स के साथ, और जो भी प्रोविजंस उसमें है उसके साथ. सो पॉलिटी, आई थिंक दिस इज़ वॉट वर्क्स फॉर पॉलिटी. गवर्नेंस में मोस्टली आई वुड से इंटरनेट से आप बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए. ई गवर्नेंस जो है उसके इंटरनेट पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं, वो आप कवर कर लीजिए. और न्यूज़पेपर में कुछ जो आर्टिकल्स आते हैं जो गवर्नेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ से आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हैं कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक इनिशिएटिव लिया गया है और वो कोई एक अच्छी क्वालिटी एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रहा है, आईसीटी कैसे यूज़ हो रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन पिक अप फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड कीप राइटिंग दैट समवेयर, कि वो बाद में आप एक कंपाइल कर पाएँ. पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आई थिंक बेसिक द अंडरलाइंग आई वुड से की थिंग इज कि लिंक स्टैटिक एंड करंट प्रॉपरली, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स फॉर द GS पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन. थैंक यू. My name is Jatin Jain. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh, and I have secured All India rank 91 in Civil Services 2022. And this was my third attempt, and it was my first mains and first interview. So in the first two attempts, I was not able to clear the prelim stage itself, and in the second attempt, I was not able to clear the CSET. So I would like to say, never give up. Even if you face failures, try to celebrate your failures, try to learn from your failures. और जितना आप उसको लर्न करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने आगे वाले स्टेप्स में, बिकॉज प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट. इफ योर प्रोसेस इज राइट, इफ योर डायरेक्शन इज राइट, अल्टीमेटली यू विल गेट टू योर डिजायर्ड आउटपुट. सो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है रादर देन फाइनल रिजल्ट के. सो हार्डवर्क इज नेवर गेट वेस्टेड. सो हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसी अपनी स्ट्रेटेजी पे, उसी प्लानिंग पे फोकस रखिए. तो फॉर दिस आई वुड लाइक टू टेल द माई स्ट्रेटेजी फॉर GS2, मेनली फॉर पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस. सो इन GS2 आई हैव सिक्योर्ड 120 marks this year. And one thing which worked for me in GS2 is, for example, polity. The content is, your examples should be unique and it should be related to the current affairs. जितना ज़्यादा करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, करंट हैपनिंग से अपन एग्जाम्पल्स लिख के रिलेट करेंगे, उतना ज़्यादा ही सामने वाले एग्जामिनर को वो अच्छा लगेगा. एंड सेकेंडली, फॉर वैल्यू एडिशन पार्ट, आर्टिकल्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन GS2. यू कैन कोट एज मेनी आर्टिकल्स एंड एज मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एज यू वांट, और जितना ज़्यादा आप कोट करेंगे उतना अच्छा रहेगा. सो उसके लिए आप ये कर लीजिए कि जैसे भी अपन लक्ष्मीकांत है या कोई भी सोर्स है आप उसको रीड करते हैं, सो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एट वन प्लेस, सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, और आपको याद रहेगा और एंड में आप उसको आंसर स्क्रिप्ट्स में लिख पाओगे. अल्टीमेटली द एम इज, आप उतना ही पढ़िए जितना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फाइनल आंसर शीट में. किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं 250 वर्ड्स, आपको 2-3 पन्ने से ज़्यादा लिखना ही नहीं है. सो डोंट बी अ कलेक्टर ऑफ डेटा, बी अ कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है अपन को, डेटा कलेक्टर नहीं बनना है. इतनी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए तो अपन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एम इज, इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गेट हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा, because if you get half marks extra in all the questions, it reflects into 10 marks per paper, and in 4 GS it reflects to 40 marks, and 40 marks can bring you in top 10 also. So 40 marks is a very big margin in a mains examination. So that is the key for polity. Be specific, try to write multiple points, and the main thing which I feel is, क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन को वो लिखना है rather than जो अपन को आता है. So read the question very carefully, stick to the demand of the question, address all the sub parts, or try to make diagrams, try to quote as many committees, thinkers, quotes. For example, in IR questions of GS2, I used to quote the quotes of our external affair minister, Mr. S. Jaishankar. So ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो, उससे आपका आंसर यूनिक भी बनेगा, वैल्यू एडिशन भी होगा. सोशल जस्टिस के पार्ट में मैं ये कहूँगा कि उसमें कंटेंट बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, बट द क्वेश्चंस व्हिच UPSC इज आस्किंग, दे आर वेरी डायनेमिक इन द नेचर. So see the PYQs, analyze the PYQs, see the topics on which the questions is getting repeated and how UPSC is framing that question. So उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी को मोल्ड कीजिए. आंसर राइटिंग स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड फॉर एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस. वहाँ पे आप डायग्राम्स वगैरह को बना सकते हैं, वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. सो वो चीज़ वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती है. एंड सेकेंडली द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल मेल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास केस स्टडीज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मैं पिपलांत्री विलेज का केस स्टडी लिखता था हमेशा कि वहाँ पे हर गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे उनको सैपलिंग्स दी जाती हैं, वो प्लांट करते हैं. ऐसे असम की भी केस स्टडीज़ है. So these are the things which you need to collect and use in your answers in different ways. So वहाँ से आपका आंसर यूनिक होगा और वहाँ से आप अपनी चीज़ों को evaluate कर पाओगे. और यही है कि आप ट्राई टू मेन थिंग इन मेंस में ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर कम्प्लीटली. यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन. कितना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आ जाए, यू नीड टू राइट. फॉर एग्जांपल दिस ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. आई न्यू ओनली 3 or 4 जजमेंट्स बट द क्वेश्चन वाज ऑफ 10 मार्क का. सो उसके बाद आई हैव मेंशन्ड अबाउट की एनजीटी के जजमेंट्स अपन जो पढ़ते हैं. आई डिडंट नो द नेम ऑफ द जजमेंट्स बट आई नो व्हाट द जजमेंट टॉक अबाउट. सो आई मेंशन्ड दोस की इन सुप्रीम कोर्ट सेड इन सम जजमेंट्स दिस इन एनजीटी डिक्लेयर्ड समथिंग दिस. सो यू हैव टू इंक्रीज योर पॉइंट्स एंड इंक्रीज योर डायमेंशन. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मेंस आंसर राइटिंग, स्पेशली इन GS2. सो पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस आर कवर्ड फ्रॉम द बेसिक सोर्सेज आपको लिमिटेड रखना है. लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है. सोशल जस्टिस के लिए कॉमन आपका जो सोर्स होगा सिर्फ वही करना है, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स करना है. एंड ट्राई टू मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ इट सो दैट यू कैन रिवाइज एंड reproduce them in your answer sheets. Thank you. Hello everyone, this is Navata and I have secured All India rank 251 in this CSE 2022 and this was my 5th attempt. So specifically related to this examination, I will be talking related to GS2 and GS3 papers because I scored one of the highest marks in these two papers. In GS2 I scored 127 and GS3 100. When it comes to GS2 strategy, I would like to mention quicker points so that it will help to make certain value additions in your answers and will help you to fetch more marks. So when it comes to GS2, first thing for both GS2 and GS3, the first thing we need to do, we have to be very much thorough with the syllabus. Each and every word is important, what is written in the syllabus, and try to make very shorter notes, at least of 1 page for every keywords that is mentioned in the syllabus. After having done this, try to refer very basic books. Like for polity, Lakshmikant is the essence. I prepared my prelims and mains preparation related to polity part from Lakshmikant only. It was the single book that I referred. Along with Lakshmikant, I referred certain newspapers. So I enriched my answers with the static knowledge of the Lakshmikant along with current affairs from the newspapers. So what I used to do with from the daily newspapers, I used to make quicker notes related to the specific keywords of the topic. So it helped me to enrich my answers, and in all the answers of GS2 and GS3, I made very much flowcharts, cyclical diagrams, and I used certain facts and figures from renowned reports or committee reports, which is out in the public domain. So it makes your answers very looking very rich, and whenever you are writing any answer, please start every answers with the basic definition, with the basic facts and the figures. It will gives your answer a very well organized structure. And in the body part, please mention and address the main demand of the question. And in the conclusion part also again made conclusions in a forward looking manner, provide certain suggestions, certain solutions to the problem which is asked in the questions. Always try to make conclusion very crisp and forward looking. So this is how we should write answers in the GS2 and GS3, because it contains mainly current affairs questions which are very much in the news during the last 4, 5 or 6 months. So the crux to gain highest marks in these two papers is just commingle your static knowledge with the current affairs. That is the key. Make lot of diagrams, fill all the pages in the answer sheet because it gives the impression that you know a lot of things. So that's the thing. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह यादव है और सिविल सेवा 2022 की परीक्षा में मैंने 318 रैंक अर्जित करी है। आज मुझे बोला गया है कि क्यों 99% लोग फेल हो जाते हैं। जनरली 5 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और 900 के आसपास सेलेक्ट होते हैं, तो इतने सारे लोग क्यों विफल रह जाते हैं, इस पर चर्चा करनी है। हालांकि इसको समराइज़ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर किसी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं तो दरअसल मेरी जर्नी 5 असफलताओं और 1 असफलता से बनी हुई है।
इसके साथ साथ मैंने 6 साल नेहरू बिहार की लाइफ को जिया है अच्छे से, तो हो सकता है मैं इस बारे में थोड़ी चर्चा कर सकूं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जो गलती होती है सिविल सर्वेंट से, सॉरी, जो एस्पिरेंट से जो गलती होती है वो है सिंसियरिटी का ना होना। आपको पूरा सिलेबस सिंसियरली एनालाइज करना होगा, देखना होगा प्रीवियस ईयर से किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है, इसके साथ साथ क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का आने का। इस तरह का कोई एनालाइज नहीं करते, बहुत कम लोग ये काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पैटर्न देखें तो अगर प्रीलिम्स में पैटर्न देखा जाए तो एक साफ साफ पैटर्न देखा जा रहा है कि अखबारी करंट जो है, जो न्यूज़पेपर में साल भर चर्चा में रहती है, वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रादर देन जो मैगजीन्स हैं उनसे आने की तुलना में। तो हमें फोकस करना चाहिए कि लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और जो लोग अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनकी समझ भी बेहतर होती है, मेंस में भी फ़ायदा होता है और प्रीलिम्स में उनका स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। सीसेट को लेकर जो इस बार 2022 में जो देखने को मिला पैटर्न, उससे साफ साफ झलक रहा है कि मैथ और रीजनिंग इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ना ही कॉम्प्रिहेंशन को। जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से उन्हें समस्या आती है। इस बार जो पेपर बनाया गया था, जहाँ तक मुझे लगता है मैथ्स बैकग्राउंड के, आईआईटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए शायद बनाया गया था, क्योंकि उनकी आदत होती है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे वो सीसेट को पास कर लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया यूपीएससी ने, और उनकी आदत नहीं होती कि कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर सकें, तो इसलिए ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ समस्या आई जो या तो कॉम्प्रिहेंशन पर रिलाई किए हैं या फिर मैथ और रीजनिंग पर। जिन्होंने दोनों मिक्सचर को अच्छे से यूज़ किया है वो आई थिंक इस बार सीसेट निकाल पाएंगे, और यही रणनीति लगभग लगभग आने वाले समय में यूपीएससी की रहने वाली है। भरोसा करें, आने वाला सीसेट इस बार से भी ज़्यादा टफ होगा, तो इसलिए साल भर है आपके पास, उसे अच्छे से प्रिपेयर करें, कुछ भी टॉपिक छोड़े ना। इसके अलावा एक जो बड़ी गलती करते हैं एस्पिरेंट्स, वो ये है कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने की तैयारी ज़्यादा करते हैं। तो पढ़ने की तैयारी में जैसे रूम चेंज कर लिया, और डिस्टरबेंस हो रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, स्ट्रेस है, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा मगन रहते हैं। इससे ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज़ पर करना चाहिए आपको। और सिलेबस में एक पैटर्न जो मैंने देखा, अधिकांश स्टूडेंट्स के जो स्टडी पैटर्न मैंने देखा, उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी इसके दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी तब मुझे भी ये गाइडेंस दी गई थी कि हिस्ट्री में ज़्यादा ना उलझना, पॉलिटी में भी ज़्यादा ना उलझना, लेकिन अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडाइवल बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है, तो उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद थक जाते हैं तो लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, फिर अगेन लक्ष्मीकांत से थक जाते हैं तो फिर अगेन स्पेक्ट्रम की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक दुष्चक्र है। इसके चक्कर में साइंस टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जो ज़्यादा स्कोरिंग और ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस कम हो जाता है। अगर हम जीएस प्रीलिम्स का पेपर देखें तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के पोर्शन को बहुत ज़्यादा फैक्चुअल कर दिया गया है और बहुत रैंडम कर दिया गया है। तो इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है उसको फिर से रीएडजस्ट करें, हिस्ट्री पर थोड़ा सा कम फोकस करें, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से करें। साइंस एंड टेक जब मैंने 2016 में तैयारी शुरू करी थी, उसी समय मैं समझ गया था कि आने वाले समय में साइंस एंड टेक का जो योगदान है, जो परसेंटेज है पेपर में पूछने का, वो बढ़ेगा। उस समय लगभग 5 से 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के आते थे, लेकिन अभी देखें तो 15 के आसपास आते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये ह्यूमैनिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे कृपया इग्नोर ना करें, अच्छे से इसकी तैयारी करें। इसके साथ साथ एक समस्या जो होती है वो है आंसर राइटिंग को लेकर। ये समस्या मेरे साथ भी थी। मैंने शुरुआत के 3 अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं लिया और उसमें आंसर राइटिंग की ही नहीं। तो इसकी वजह से मैं कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। इवन इस साल जब मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, अभी भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी स्पीड, हाथ की राइटिंग स्पीड मेरी उतनी नहीं है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर काम करें। जो कमी मेरी रही वो आप ना करें। प्रयास करें कि पूरा पेपर हो अच्छे से, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है, और ये सच बात है। वो पूरा लिखें, पूरे पन्ने भरें, तो उस बात का भी फर्क पड़ता है।
और आंसर राइटिंग के लिए आप ज़रूरी नहीं कि तैयारी के पहले दिन से ये काम करें, पहले थोड़ी समझ विकसित होने दें, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करें, उसके बाद एक अच्छी आंसर राइटिंग निकल कर आती है। और ये काम ज़रूर करें जो मैंने इस बार के अटेम्प्ट के लिए किया था, कि जैसे हमारा सिलेबस है जीएस का, उसमें कोई भी टॉपिक हो, फॉर एग्जांपल अगर गरीबी का टॉपिक है, गरीबी के टॉपिक पर लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के अनुसार जो इंट्रोडक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कंक्लूजन चेंज नहीं होता। तो अच्छे कंक्लूजन और अच्छे इंट्रोडक्शंस इकट्ठे करें हर टॉपिक पर। ज़्यादा टॉपिक नहीं है जीएस के, टोटल मिलाकर देखें तो उन पर एक अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन या तो खुद से तैयार करें, अखबार से उठाएं, या फिर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोगों की जो अलग अलग वेबसाइट्स पर टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट कॉपीज़ हैं, उनसे उठा लें और एक अच्छा नोट्स बनाएं। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ाई के दौरान लोग एक दिक्कत करते हैं कि सिलेबस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। उनकी ये शिकायत रहती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा तब है जब आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे। कॉम्प्रीहेंड करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला, फर्स्ट रीडिंग आपकी धीमी होनी चाहिए, उसमें आपको समझ कर पढ़ना है। इसमें फोकस इस बात पर मत रखिए कि आपको कितना याद हो रहा है, फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हर चीज़ को आपने समझा है अच्छे से। उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो होता है कि अब उस जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको, जो भी सिलेबस का पोर्शन आपने पढ़ा है, उसे मेमोराइज़ करें। जब आप मेमोराइज़ करेंगे, जब वो आपके दिमाग में होगा, तब चीज़ें आपस में इंटरलिंक होना शुरू होंगी। चीज़ें कॉपी पर या नोट्स में इंटरलिंक नहीं होती, हमारे दिमाग में होती हैं। और दिमाग में होने के लिए पहले समझना और फिर मेमोराइज़ करना, दोनों ज़रूरी है। इसके बाद जो ज़रूरत है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डेटा, उनके एग्जाम्पल्स और उनसे संबंधित जो थ्योरीज़ हैं वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, उन सबको यूज़ करना। एक काम मैंने जो इस बार किया था, जो काफ़ी लोग अपने आंसर राइटिंग में नहीं करते। शुरुआत में हमें भी कुछ कोचिंग्स ने बताया था कि एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दो रादर देन फैक्ट एग्जाम्पल्स के, लेकिन ये बात गलत है। एनालिसिस के साथ साथ अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे फैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, और यही हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं आप में और एक साधारण एस्पिरेंट में। इसके अलावा जो एक है प्रीलिम्स के लिए, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि इंटेलिजेंट गैस वर्क से आप बच नहीं सकते। आप अगर बच रहे हैं तो यूपीएससी को दोष देंगे कि यूपीएससी पेपर ऐसा बना रही है कि तुक्के का ही खेल हो गया है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन वो प्योरली तुक्का भी नहीं है, इंटेलिजेंट गैस वर्क है। आपको ये करना होगा। आप जब भी टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ जब भी करें, तो 100 के 100 क्वेश्चन हल करें। ज़रूरी नहीं है कि असली पेपर में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में तो करें, वहाँ 100 के 100। और देखें कि जिन-जिन क्वेश्चन्स में आपने तुक्के मारे हैं, उनमें कितना परसेंटेज जो है सही क्वेश्चंस का है, कितना गलत है। उसके अलावा जो गलत हुए थे, क्या उनमें ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें 50-50 का गैस मारा था? अगर 50-50 गैस की बात है तो क्या उनमें उन 2 ऑप्शंस में सही ऑप्शन भी था? सही ऑप्शन होने के बाद भी आपने गलत आंसर उसमें टिक किया, तो क्या कारण हो सकते हैं? उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर गए थे, कम कॉन्फिडेंस की वजह से आपने उस ऑप्शन को चूज़ नहीं किया। कई बार होता है कि हम सबको इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो सेफ ऑप्शन होता है, लेकिन हमेशा सेफ ऑप्शन सही नहीं होता। यूपीएससी चाहती है कि आप बोल्ड डिसीजंस लें, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि केवल एक युग्म भी सही हो सकता है, बाकी 3-4 गलत हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट गैस वर्क का प्रयास करें पूरे साल। और अगेन, हाँ, एक बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है कि न्यूज़पेपर पढ़ें रेगुलरली, इसे छोड़ें ना। ये आपकी तैयारी के अंतिम समय तक काम आएगा, इंटरव्यू तक। इंटरव्यू में तो न्यूज़पेपर और भी रेगुलरली पढ़ना होता है। एंड दैट्स इट। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी तैयारी करें, मोटिवेशन रखें। मैंने भी अपने 6 साल प्रिपरेशन को दिए, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया मैंने। 2017 से मेरी तैयारी शुरू होती है। 2017 में प्रीलिम्स नहीं निकला,
फिर उसके बाद मेरा 2 बार मेंस नहीं निकला, लेकिन हर बार मैं सफलता के करीब पहुंचता गया। एक उम्मीद थी कि हाँ, अंत में सफलता मिलेगी मुझे। और एक अंतिम बात मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, और ये काफ़ी रिवीजन भी डिमांड करता है। इसको लेकर नोट्स भी उतने प्रॉपर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए आपको इसके लिए स्पेशल तैयारी करनी होगी। रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, हालांकि मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा डेफिनेटली, कुछ दिनों में उसको अरेंज करके मैं शेयर करूंगा। मैपिंग पर ध्यान दें, जो सेकंड पेपर में मैपिंग पूछी जाती है उसके लिए उसको इग्नोर ना करें। जितनी ज़्यादा मैपिंग सही होगी उसी प्रोपोर्शन में लगभग आपको ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में मार्क्स मिलेंगे। लास्ट ईयर मेरी 4 ही मैपिंग सही थी, इस बार मैं डेली सोने से पहले 1.5 घंटे मैपिंग ही पढ़ता था, तो इस बार 10 की 10 मैपिंग सही थी। Hello everyone, this is Asad Zubairi and I have secured an All India rank of 86 in UPSC Civil Services Examination 2022. This was my third attempt at this exam. So my journey has been around 4 years long, in which in my very first attempt in 2020, I could not clear the prelims exam. Thereafter, in my second attempt in 2021, I reached till the interview stage, but hard luck, I was again out of the list. But this year, in my third attempt, I've secured a rank of 86. This was my journey in short. And this year, there were two papers which have played a very important part in my rank and my good performance in this exam. This is the paper 1, that is essay paper, and GS paper 4, ethics. So I'm here to talk about that. When we consider the essay paper, so a lot of people ask about how to prepare for essay. In my opinion, preparing for essay is very different from preparing from GS. So we already have a lot of information about how to write essay and also what to write in essay, because we have our diverse sources in GS 1, 2, 3 and 4 papers. So the information part is done. What after that? So I think that in an essay, one has to be very organic and one has to write essay very simple, close to one's heart. What I mean to say is that you can gather a lot of examples on something, but do not make example as the sole body of your essay. The sole body of an essay should be divided into different sections in which you are putting forward your view and they supported your view, then you are supporting your view with an example. So for example, if I'm writing an essay on perseverance, something related to perseverance, so I'll start with a story in which perseverance is shown, and thereafter I'll move ahead to tell the examiner of what perseverance means for me. So this was my approach, and I gave essay very organic flow, which did not break because I was not quoting a lot of examples or books, because I'm not someone who reads a lot. So my only advice for scoring good in essay is that please be yourself. Write simple essays, quote a lot of examples, but do not overload it with examples. Write your view and support your view with examples, and I hope you'll score so well. The second paper I want to talk about is GS paper 4, that is ethics, and it played a huge role in my success this year because I scored 119 marks, and last year I scored only 94 marks in ethics. So I have gained around 25 marks there, which is a huge jump for me. How I prepared this year was that with my friends Dwij Goyal and Subrato Sharma, we were discussing all the PYQs from 2013 to 2022, and we were solving them quoting several dimensions and example for each question. For example, if we consider a quality called compassion, so there are different dimensions for compassion. There's an environmental dimension, there's an international relation dimension, that is the refugee resettlement. There's a governance dimension, for example, the government schemes like Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, etc., etc. So we did this exercise, and for every value and for every question, we had a lot of perspective, we had a lot of example there. And we made common notes, we prepared together, and luckily all three of us landed a good score. So in theory paper, try to be more diverse, try to think from different perspectives, and try to write the application part of the question that is being asked too. When I consider the case studies, I would say I did not follow a set pattern. For example, the stakeholder analysis, etc. I followed it in 1 or 2 questions, but for others, I was hitting directly on the demand of question. And also towards the end of case studies, I would say it will be great if you write about the long-term solution, so that the examiner would know that your view on certain issue is not so myopic and you are someone who has a diverse
interest and also who can think in a long-term perspective. So these are things which helped me secure a good rank and a good score this year. Lastly, I would just say keep working hard, keep identifying your mistakes and rectifying them. Do not repeat your mistakes, and I hope you will get a very good rank next year. All the best. Good morning, everyone. My name is Utkarsh Ujjwal. I have secured rank 68th this year in Civil Services Exam 2022. My optional is Anthropology, and this was my third mains. I wrote the mains of 2020, 21 as well as 22. And here in this video, I'd like to talk about my strategy for ethics paper. In my first mains, in 2020, I got, I think, 77 marks in ethics, but I improved it to 107 in 2021, and in 2022 I got 113 in ethics paper. So my marks have improved in ethics paper, and I'd like to share my strategy on the same. As we know, ethics paper has two sections, section A and section B. Section A has theory questions and section B has case studies. Both areas demand different set of challenges as well as different strategies to prepare. Section A as well as section B. This is case studies, 120 marks, and this is 130 marks. 13 questions worth 10 marks and 6 questions worth 20 marks. Now, the key here is to prepare for both the areas separately as well as prepare common areas that we can have. For example, common areas that I made sure in my preparation is I prepared the value addition part, which is common to both the sections. This can include quotes, examples. Examples can include freedom fighters, or it can have Padma awardees and civil servants. So make a note of all these examples that you can find on the internet as well as on in Topper's copies. And apart from that, you can also have some shlokas that you can prepare. And the most important thing is to prepare the keywords, because every paper demands different set of keywords that have to be used. Ethics paper in particular has several set of keywords that have to be used. Paper specific keywords can include two areas. First is the keywords that are mentioned in the syllabus, are in, and second set of keywords are not in syllabus. इन दोनों को हमें क्या करना है? Prepare the definition, prepare examples from your own life as well as national or international examples. International examples. Also prepare current affairs. Take a look at the current affairs where these values or these keywords have been shown. For example, if we take the keyword of integrity, then prepare the definition, one-liner definition. Prepare examples, your life as well as famous examples also. And prepare quotes where this keyword is there. Similarly, अगर आपके पास ऐसे सारे value addition points आ गए हैं, तो you are well equipped to write the ethics का पेपर. एथिक्स के पेपर लिखने में ध्यान ये देना पड़ता है कि जैसे GS3 का पेपर होता है मॉर्निंग
और उसके बाद we have a break of around 3 hours, and after that we have the ethics का paper. GS3 में we have to write very objective stuff, but ethics paper demands us to write very specific words that can only be used in the ethics paper. So it's important to have a list of all these keywords of ethics paper and revise them before the exam so that we can use it in the exam, and also be very liberal in using examples, case studies, shlokas, quotes, and these things add value to the report, add value to the answer. And it also demands us to have a very rigid strategy of attempting the paper. Strategy of, because ethics का paper ऐसा होता है, we have the GS1, then GS2, GS3, then GS4. Now ये एक दिन होता है, ये अगले दिन होता है, तो ये जो GS4 का पेपर होता है, this is the last paper of second day, तो इसमें आता है fatigue. इस फटीक से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस पेपर्स बिफोर हैंड सो दैट पेपर नहीं छूटे, बिकॉज पेपर छूटने का मतलब है कि आप कुछ क्वेश्चन से पहले से लूज आउट कर रहे हो. सो बहुत स्ट्रेटेजिक रहना है कि हम पार्ट ए और सेक्शन ए और पार्ट बी इसको कितना टाइम डिवोट करेंगे. दिस इज 120 मार्क्स, दिस इज 130 मार्क्स. सो रफली हमें दिखता है कि 3 में 1.5 घंटे इधर देने चाहिए, बट आइडियली आई थिंक दिस टेक्स अराउंड 100 मिनट्स and this takes around 80 minutes. तो आपको 13 क्वेश्चन 80 मिनट में करने हैं, तो क्लोज टू 7 पॉइंट सम मिनट्स यहाँ लगेंगे. तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम पेपर ना छोड़ें और कोशिश करें कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं विथ डिसेंट इनफ कंटेंट. एंड आई थिंक इफ वी डू दीज थिंग्स, द बेनिफिट ऑफ इट इज़ दैट द सेम कंटेंट कैन बी यूज्ड इन द एसे पेपर ऑल्सो, एंड सिमिलरली एसे की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो जाती है. And we see that all the 8 topics of essay are of philosophical nature this year, and I think this will be repeated in next year also. So it's very important to prepare ethics very holistically so that you can use the same content in both the papers and get decent enough marks. Thank you so much, and thank you again. Hi everyone, I am Rajat Yadav. I secured All India rank 111 this year, and this was my 3rd attempt. In my previous 2 attempts I couldn't clear prelims, so I think I have something to say to people who face such kind of failures at different stages of their preparation, that you need to sort of zoom out of that situation at that moment, that it is not the end of the world. It is just you were slightly unlucky, and in addition to that you faced certain problems, could not do certain essentials that are required for this exam. So you need to assess them and then sort of learn from them. So failure is not like not clearing the exam, but failure is not learning from your mistakes and not rectifying it. And I would like to say that this exam does not require IQ, EQ or anything else. It just requires the right strategy, the right fit, as in what is required in various stages of this exam, be it prelims, mains and interview. You must do the essentials. Lastly, I would like to say that my score in essay is one of the highest. So apart from the GS pointers, I think which are quite well known, I would like to stress on my essay strategy. So which was basically, you have to prepare the structure in a very nice manner. Excelling in the essay requires excelling in the brainstorming part, which comes at the beginning of the essay. I used to give 30 minutes to each essay's brainstorming part. So there you can sort of collate your thoughts, come up with various dimensions. Even there's a trick in this, that when we write intro, body, conclusion within the essay while brainstorming, you should not think of the intro first, rather you should think of the body parts. Then you can design an intro which is exhaustive enough. This is one thing. And secondly, essay these days, the examiners, they reward novelty in essays. Now no formulaic or mechanical approach does not hold good these days. Ever since 2020, this is the trend. And so this is my second point. Thirdly, obviously we have to cover all the dimensions, so sectoral and temporal. Within sector, so what some people miss is the individual dimension. We know all about pestle or speechlet, social, political, all that, but individual part is always missing, or
most of the times missing. So, for example, my first essay was a ship does not ship and harbor wala question. So in that I started with the individual level analysis, that a little bit of stress, a little bit of going out of the comfort zone helps in improving the performance. So which is basically the Yerkes-Dodson curve. Even if one does not know about the curve, one knows that this is the fact. So this pleases the examiner. Also temporal is necessary. Wherever you can, you should fit that, how this phenomena, how this concept came into being. And lastly, I would like to say that there are also counter arguments which are necessary. We sometimes completely miss that. So especially in philosophical essays, no one perspective is right. One is obviously your thesis which you are supporting, but counter perspectives are necessary. For example, in this very question, I wrote that it is sometimes you should be in your comfort zone, sometimes you should be calculative and not very not having any knee-jerk reactions. So this was it. Apart from that, my personality test score was also good. I attended a couple of mocks at KSG, one even with one-on-one session with Khan sir. It was like perfect. I attended it 3 days before my interview and it really helped me. So I would like to thank KSG. I am excited to be at training with all my fellow aspirants turned bureaucrats. Thank you so much. A very good afternoon, everyone. My name is Yadav Suryaban Achilal. This year I have secured rank 27 in Civil Services Examination of 2022. Herein, I would like to briefly mention about how had I prepared for the ethics paper, that is GS4 paper, in this upcoming examination. For the last 3 years, persistently I have been appearing for mains, and I have scored a score of 114 and then a score of 90 and a stagnation of 90. This 114 is also a reflection of a stagnation of a score of 90, approximately, as the marks were escalated that year. In that context, I have scored a decently above average of 121, and I would like to give you certain hints. How did I score this? Firstly, you need to relate all your answers with the theoretical aspects and the theory portion of the segment paper A. Secondly, you need to link all the philosophers and their names. For example, if there is certain virtue ethics theory by Aristotle, you can mention in the answers as well. Thirdly, as much as possible, try to mention examples from the different perspectives, be it legal, ethical, administrative, judicial, and so on and so forth. If possible, try to mention of the constitutional articles, the judicial judgments, and if any case studies across the globe or international, whatever is happening, you can mention that as well. Fourthly, I believe certain diagrams can also help in scoring more marks. For example, if I mention that impartiality is a sine qua non value along with the integrity for the civil services, then you can simply make a diagram of this, two Venn diagrams. We can say this is impartiality, this is integrity, and this portion reflects ethical administration, good governance, and so on and so forth. This will improve your writing skills, your presentation skills, and will help in fetching you more marks in the paper 4. These are certain segments that I probably have done this year, therefore the marks have escalated. You have to make a template of all these figures priorly. For example, some might have a figures of these kinds, some might have any other figure. Let's say there is a balancing, the question, the statement mentions about balancing, then you can simply draw a figure like this. There can be any diagram. You just need to work upon yourself and be consistently thorough with your preparation. That's all from my side, and for the details I will be uploading accordingly. Thank you. I am Dr. Anjali Garg, rank 79 in UPSC CSE 2022. So today I will be talking about the subject environment, how I prepared for the UPSC exam. So for the prelims, environment is very important क्योंकि उसमें से काफ़ी questions आते हैं, around 10 to 15 questions तो definitely indirectly directly environment के होते हैं. तो उसको मैंने प्रिपेयर किया और साथ साथ में जो मंथली करंट अफेयर्स आती हैं उसमें से मैंने थोड़ा डिटेल्ड पढ़ा था एनवायरनमेंट का. जैसे उसमें कोई स्पीशीज आया तो उसके बारे में मैं खुद से थोड़ा पढ़ लेती थी कि कैसे उस स्पीशी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ होती है, कौन से नेशनल पार्क में होती है.
और PYQs के बेसिस पे कि वो क्या पूछते हैं उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया था। जैसे कि नेशनल पार्क्स है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, रामसार साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, ये बहुत पूछते हैं। तो मैंने उन सब की मैप पे एक लिस्ट बना ली थी, मैप पे बनाती रहती थी कि ये राजस्थान में इतने नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व ये हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि वो कई बार पूछ लेते हैं कि दिस इज इन बिटवीन दिस एंड दिस, उस पे कौन से रिवर फ्लो करती है। तो उसका अगर हमारे पास कंसाइज एक पेज पर मैटर है तो वो बहुत हेल्प करता है प्रीलिम्स से पहले रिवाइज करने में। देन आई टॉक्ड अबाउट नेशनल पार्क्स वगैरह। फिर ये कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट करती है, सेंटर करती है। बायोडाइवर्सिटी साइट्स को अगर लोकल कमिटीज या डिस्ट्रिक्ट करती है तो वो सब हमें पता होना चाहिए। किस एक्ट के अंडर कौन सी बॉडी आती है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हमें लगता है कि साइंस वाले में आएगी, बट नहीं, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से एक्ट के अंदर कौन सी बॉडी है। वो सब मैं लिस्ट बनाती रहती थी। और पीटी में जो सारा पोल्यूशन वाला है, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, फॉरेस्ट सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं करती थी, कितने % है, कितना है, क्या उसकी रेशो है, वो सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रहती थी। और उसके मैं मॉक्स करती थी, सब्जेक्ट वाले भी और फुल लेंथ भी। तो इन्वायरमेंट जितनी मैं मॉक्स से रिवाइज करती थी वो भी काफ़ी हेल्प करती थी। देन कमिंग ऑन टू द मेन्स पार्ट, तो मेंस में एनवायरनमेंट के जैसे 3 या 4 क्वेश्चंस आने हैं GS 3 में, तो थोड़ी थोड़ी उसकी इंट्रो और कंक्लूजन्स मैं प्रिपेयर्ड रखती थी। कि इंट्रो में जैसे कि किसी तरह का क्वेश्चन है तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का मैं इंट्रो कर सकती हूँ कि इंडिया का ये रैंक है, या इंडिया ने इंप्रूव किया है। और कंक्लूजन में मैं सोच लेती थी कि इन अचीविंग फॉर दिस इंडिया विल अचीव द पंचामृत गोल ऑफ दिस, या फिर प्रो पीपल प्लानट, जो भी लाइन्स हैं अपनी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो सबसे मैं थोड़ा कंक्लूड करती थी। तो जो भी इन न्यूज़ है उसकी कुछ पॉजिटिव लाइंस कंक्लूजन में डाल सकते हैं। देन बॉडी के अंदर उसमें पॉइंट्स डालो और उसमें साथ में एग्जांपल्स डाल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यूरोप में ये हुआ है, हीट वेव्स यहाँ आई हैं, उस सब की हम एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। देन डाटा पुट कर सकते हैं कि इतना चेंज हुआ है, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, इतना सी ओशन राइज हो रहा है। तो दैट वे वी कैन टैकल द मेन्स। सो दिस वॉज माई जनरल स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट। Hello everyone, my name is Vaishali. I have secured rank 23 in this year's UPSC CSE 2022 examination. मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरी GS2 स्ट्रैटेजी शेयर करना है, बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 135 मार्क्स इन GS2 दिस ईयर, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स। रिगार्डिंग दी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी फॉर GS2, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आप GS2 में एक रिपॉजिटरी प्रिपेयर कीजिए सबसे पहले, लाइक केस लॉस, particularly Supreme Court judgments, and even if there are some High Court judgments, like there was a judgment in the Haryana High Court as well, which I used in my GS paper. So these judgments help to enhance the value in your answers of GS2. Also GS2 के आंसर्स ऐसे हैं जिसमें आप स्टैटिक और करंट दोनों को लिंक कर सकते हो और बहुत क्रिएटिवली लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस बार का पेपर याद आ रहा है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आर्टिकल्स भी यूज़ किए जो कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैंने कुछ ऐसे इवेंट्स यूज़ करे, लाइक राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स चला रही हैं पंचायत को इन्हांस करने के लिए, और कुछ ऐसे SHGs के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम न्यूज़ में कवर करते हैं, वो मैंने साथ में स्टैटिक के साथ में लिंक करके उन आंसर्स को लिखा। तो GS2 में आपके आंसर्स डिफरेंशिएट इस चीज़ से नहीं होंगे कि आपका कंटेंट स्टैटिक कितना स्ट्रॉन्ग है, बल्कि आप उसको करंट सिनेरियोज के साथ लिंक कितना अच्छा कर पा रहे हैं। सो सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स की एक रिपोजिटरी बनाएं जो कि आपको न्यूज़, करंट अफेयर मैगजीन्स, PRS, PIB कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है। इट्स योर जॉब टू कलेक्ट देम एट वन प्लेस सो दैट कि आपका रिविजन पार्ट ईजी हो। एंड थर्ड एलिमेंट जो मुझे लगता है GS2 का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत डायनेमिक पार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर में वर्ल्ड न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दे रहा है। तो इस पार्ट में एक तो मेरा वैल्यू एडिशन ये था कि मैं वर्ल्ड मैप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखती थी, सो दैट कि मुझे कहीं पे भी अगर IR का क्वेश्चन आए तो मैं वर्ल्ड मैप ज़रूर बनाऊंगी, या फिर अगर वर्ल्ड मैप का पूरा यूज़ ना कर सकूं तो मैं एक पोर्शन बनाऊंगी। लाइक इस साल बिम्स्टेक का एक क्वेश्चन था तो मैंने उसमें साउथ एशियन रीजन का मैप ड्रॉ किया था, और उसके साथ ही मैंने फिर कंट्रीज़ को लेबल करके इन पर्टिकुलर उस कंट्री स्पेसिफिक अगर कोई डायमेंशन में कवर कर सकूं IR के उस क्वेश्चन में तो वो मैं लिखती थी। तो इस तरह हम जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन।
फर्दर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर हम कुछ डिग्निटरीज की स्पीचेस को बहुत ध्यान से सुने तो वहाँ से हमें कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, लाइक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और जैसे G20 अभी चल रहा है तो वसुदेव कुटुंबकम, ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं जो हम कुछ स्पीचेस के थ्रू अपने आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू मेक इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स। एंड ये हमारे आंसर्स को बहुत फ्रेशनेस देते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस लोग बहुत ज़्यादा स्टैटिक सोर्सेज से कवर भी कर रहे हैं, बट अगर आप उसमें कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो कि आपकी न्यूज़ और कुछ किसी स्पेशल पर्सनालिटी ने उसको बोला है, और जैसे कि मिस्टर एस जयशंकर की जो फ्रेजेस होते हैं वो बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड होते हैं, so I tried to use them in intros and conclusions, and in this way we can improve the quality of answers in this regard. So that is all from my side regarding GS2 preparation. Hi, my name is Shubham. I have secured rank 41 in UPSC CSE 2022. In this video, I will talk a little more about how I succeeded in this exam in my first attempt. So, what you should keep in mind before you sit for this exam. So, you should keep following things in the mind. First is the syllabus. You should know what the syllabus is, what the exam is. You can know what the exam is if you read the syllabus. Second thing, I would request you to go through the previous year questions, because previous year questions will tell you the trend that is coming in the examination, both in the prelims as well as mains. So go through the previous year questions, analyze them. And third thing that you should do before you attempt this paper, this exam, is that you analyze the whole strategy of the toppers, that what they have done so that they got rank. So based on all the things that you have seen in the topper talks, make your own strategy. Your own strategy should be original. Take something interesting from each and every topper that you find logical, that you find it would work for you. So make your own strategy based on what other toppers have done, also based on your own logical thinking. Next thing that you should do is decide whether you need a coaching or not. For me, I decided that these are very easy, like easy books like NCERT or standard books. I thought I could do it on my own. So मैंने like coaching नहीं join किया for the GS. So I decided before the preparation itself कि I will not join coaching. I will do it on my own. I will do the GS on my own. Next thing that you should do, you should remember before you start preparation is like choose your optional, because optional preparation is like very lengthy. Optional is the very core of this examination. If you get very high marks in optional, you will get a very good rank. If I give my own example, I chose geography. I decided even before my preparation that I will take geography as an optional, and in my this attempt I got 298, which is the highest among selected. So actually geography as an optional played the most important role in me getting 41st rank. So choose your optional wisely, have interest in the optional, and also strategy, see if you are able to do that optional or not. So these were some of the few things. If I would like to add some more, you should have confidence in your own strategy. Once you make your strategy, have confidence in that and maintain that confidence for as long as you can. So you require consistency, like consistently give tests, consistently work on the feedback, do revisions. So all these things if you keep in mind even before you start the preparation, your preparation becomes very easy, it becomes very smooth. Another thing that you can do is accept that it would be very like lengthy process, it would be very boring process, and you need to like do some things, like you need to accept that you need to like give a lot of tests. I gave a lot of tests. My whole preparation was based on tests. I accepted that I would have to write more tests. So acceptance is very acceptance is the like key to this examination. Another thing can be have life beyond UPSC. Don't just stick to the UPSC syllabus, because if you see this year prelims paper, they have asked a lot of sports related questions or awards related questions. These are not specifically mentioned in the syllabus, but if you are interested in these things, have your own reading habit, it had been easier for you. So have life beyond UPSC. And one last thing I would say, keep your mental health in check. UPSC is not everything, and it's not the end goal of your life. Maintain your mental health. Have support from your friends and family. If you have any problems, do seek their support. Thank you.
Hello everyone, I am Anshika Jain and I have secured 306 rank in this CSE 2022 and this was my 5th attempt. So first of all, I would like to congratulate all other fellow peers who have cleared this exam and have got their name in the holy PDF. And for the aspirants, I would be talking about prelims because that was the main stage where I struggled a lot because this was my 5th attempt and only second prelims where I could, clear. So the strategy that I used or I changed from my previous attempts, it was basically about practice and revision. So as we know that prelims has two major portions, that is static and current. So I focused majorly on static. I made that very strong so that I do not falter on those questions. And for current, I referred multiple sources starting from newspaper. So you must be knowing all the sources that you have to refer, but I would like to talk about what I changed in this. So I practiced a lot in my third and the fifth attempt because I knew I have learnt everything. But what was more important was whether I am able to recall when I was answering the questions. So I practiced a lot, like approximately 50 plus papers I solved in one attempt. And second most important thing was I did not just solve the papers. I gave 2 hours to solving the papers and 5 hours for seeing where I lagged or where I could improve or what were my mistakes. Like, if I have guessed some question, was my guess right? How much I should attempt? What was my good score? So all these analysis was done in those 5 hours. So I think rather than those 2 hours where we give the exam, what is more essential during the preparation is those 5 hours where we are analyzing how can we improve in the next test. So I think every aspirant should give sufficient and ample amount of time for their preparation, for their analysis of the test. And secondly, what I did was I solved previous year questions, not just questions. I would, like, in the last 10 days I would sit for 2 hours 9 to 11 and would solve the previous year questions as a paper, like 2018 paper or 2019 paper or 2020. That would help me gauge that mindset of UPSC, like how what kind of questions they are asking and how they want UPSC aspirant to respond to that. So that kind of helped me to gain that mindset with which UPSC works. So that helped me a lot. And I think every aspirant should focus on the previous year questions a lot, be it mains, be it prelims, because that should be your strength. That is where you build upon in this process. And I would like to wish all the aspirants a very all the best, and I hope you do all well in the future. Thank you. मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 89th रैंक प्राप्त किया है। मैं बिहार के शिवहर ज़िले की रहने वाला हूँ। मैं आज ऑप्शनल के बारे में बात करूँगा कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने पहले एक दूसरे ऑप्शनल के साथ तैयारी स्टार्ट की थी, असफल हुआ था। फिर मैंने ऑप्शनल चेंज करके फाइनली 2 बार सक्सेस प्राप्त किया इस एग्ज़ाम में। ऑप्शनल को लेकर जहाँ तक मेरा था तो पहले मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी किया था, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट था। बट चूँकि मेरा मीडियम हिंदी था और हिंदी में उस कुछ वक्त तक जो ज्योग्राफी थे वहाँ पर शायद बहुत अच्छे अंक नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा। तो उस वक्त मुझे लगा था कि शायद मुझे कोई और ऑप्शनल के साथ जाना चाहिए। तो मैंने एक डिसीजंस लिया था और मैंने मैथिली लिटरेचर, जो बहुत कम लोग लेते हैं शायद, तो उस ऑप्शनल के साथ गया था। और उसके बाद के मेरे दोनों अटैम्प्ट में मेरा था सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर मैं IPS बना था और इस बार फाइनली IAS। तो ऑप्शनल को लेकर जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो सबसे ज़रूरी ये होती है कि आपका उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट मत ले लीजिए जिससे आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में जो हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है वो GS की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होती है। हमें ज़्यादा समय तक उसको पढ़ना होता है, ज़्यादा डेप्थ की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक इंटरेस्ट रखते हैं उस सब्जेक्ट में। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्या उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है या जो गाइडेंस है, जो बुक हैं, वो सब अवेलेबल है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिंदी माध्यम के छात्र कोई ऐसे विषय को ले लेते हैं जो मुख्यतः टेक्निकल है या इंग्लिश में है, और उससे अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी करेंगे तो शायद वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको कंटेंट और वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जब भी आप कोई ऑप्शनल चुनाव कर रहे हैं तो ये देख लें कि उससे जुड़े हुए गाइडेंस वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। कुछ पॉपुलर ऑप्शनल है जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि
क्या उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पिछले कुछ वर्षों में मार्किंग का पैटर्न किस तरीके से रहा है, क्योंकि हमें अंततः एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमें एग्ज़ाम में सफल होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे में जो सब्जेक्ट अच्छा स्कोर कर रहा है अगर आप उसके साथ जा रहे हैं तो एक बेहतर संभावना होती है कि आपकी भी जो रिजल्ट हो वो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल को लेकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आप थोड़ा सा जो जीएस से जुड़े हुए अगर टॉपिक से जुड़े हुए जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जीएस के दौरान अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़िए और देखिए कि क्या आप उसमें कंफर्टेबल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उसको एनालिसिस कीजिए, और जो उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे उनका रिव्यू लीजिए, और इन सब के बाद आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। Hello all, my name is Garima Narula. I have done my graduation from Hindu College, Delhi University. My graduation subject was English Literature. This was my first attempt and I have secured All India rank 39. My optional is Sociology. So firstly, I can talk about how to, since I have cleared this in my first attempt, I can give certain strategies that I followed and certain foundations on which you can base your journey of the UPSC so that you'll be able to clear in the first attempt. So my main focus was to focus on limited sources and multiple revisions. I tried to read and revise and continuous revision on the certain topics, on all the topics. For the mains, what I did, I used to get a printout of the syllabus, and then topic wise, I used to read my notes. There were the notes from my class notes, and I wrote that, and then I used to revise that continuously. Along with that, I referred one basic source or maybe 2 basic source. Majorly was the 1 basic source. For example, for Lakshmikant, polity, and for history, I read old NCRTs. So for that, I had my notes. Along with that, I used to revise my basic books. And then in the subsequent revision, I used to add the important points which were not there in my notes. So from the basic books, I used to add on those things. So this is how I have built up my notes, and I used to just revise them as many times as possible. I tried to focus on the syllabus for the mains because the syllabus is the very important portion of attempting the mains. So that is how I did, and I wish all the best to all the aspirants. So my suggestion and one of my message for all the aspirants would be to focus on limited resources and multiple revision because that works. Along with that, I'll talk about how did I prepare certain aspects of society, which is paper 1. I prepared the Indian society portion. I had my class notes for it. And those class notes included topics from society. For example, how is Indian society? What are the basic features of Indian society? And what are the foundations of Indian society? How it is changing with respect to industrialization, with respect to modernization. So I used to have all the basic points for them, and then I used to revise them. My optional was also sociology. So in that thing, what I did was, obviously sociology helped me in preparing Indian society, but still I would say Indian society is a very basic subject that everyone can easily understand. For that, if you don't have any particular resource, you can also refer 11th, 12th NCRTs for society. That can help you to understand about the Indian society. For example, there was a topic, what are the features of Indian society? So I used to make little very small points. For example, joint family, patriarchy. Certain points were very common. So I used to write them and add on certain basic definitions related to that. And wherever the datas were available, I used to collect those datas and then add it to the point. So this is how I have prepared Indian society. So what I'll suggest to everyone that just take a note of the syllabus, the main syllabus. If you are studying Indian society, make sure that you are very thorough with all the topics within that.
and then you have a write-up for that, the problems, the causes, the reasons, the solutions, and even the recommendations for all the general topics. First, this is how I've prepared, and especially the topics like social issues like women empowerment and women related issues. So what I did, I used to follow a proper structure in that, where I used to write a definition, starting the answer with definition or making a write-up with a proper definition. Then any data related to it, for example, domestic violence or dowries related data, whatever I used to come across through fact sheet or any data is available online. So through that, I used to add the datas. Then I used to add the problems that are persisting within women related issues, and then how to solve those issues. Then I used to write what are the government interventions as well as the government schemes for especially for the women. So this is how I proceeded my topics, and then I used to end all the answers in a positive note. And this is how I've prepared for Indian society topics like women empowerment, and especially for the first attempt, I will suggest everyone to keep writing and follow a particular plan, keep a weekly plan, monthly plan, and follow a revision schedule. Thank you. Hello everyone, I'm Amir Khan and I've secured rank 154 in UPSC CSE 2022. This was my third attempt and my optional was philosophy. So I'll be talking about how to pick your optional for UPSC. The first thing you have to remember is that you will be studying your optional multiple times throughout your UPSC preparation. So it should be something which you can study with same gusto and interest throughout your preparation. So pick an optional which you find interesting. Then the second consideration should be availability of sources and guidance. So any optional in which you can find sources and guidance easily, you can go for that option. Then third consideration should be past record of scoring. If scoring pattern is fairly consistent, then that option is considered safe. However, it is not to say that other options are in that regard are risky. But still, the optionals which have proven their record in terms of scoring are considered safer. And one consideration that you can take into account is your graduation subject. If you have a good command over your graduation subject, then it provides you an additional edge while preparing for UPSC in that optional. So that also you can take into account. The second point I would like to talk about is how to prepare for UPSC prelims. Now, prelims is a very uncertain exam in which questions can be asked from anywhere under the sky. So in that respect, it becomes less practical to study a lot of things. More practical approach here would be to study limited sources, all the basic sources which everyone studies, for example, Lakshmikant, Spectrum, etc., or your coaching notes, and then do a lot of practice. Attempt as many questions as you can. Try to solve full-length paper in examination under examination conditions to acclimatize yourself with the uncertainties and pressure of the examination on the final day. So in UPSC prelims, considering the uncertainty of examination, practice becomes very important. The third point I would like to talk about is how to analyze UPSC PYQs. Now, previous year questions of both prelims and mains become the foundation for your UPSC preparation. They provide you a direction and orientation while studying your subjects. So in that respect, analyzing them becomes very important. When you analyze paper questions, you should have what you should keep in mind is the topic from which questions are being asked, the topics from which questions are being repeated, especially in mains. Even in prelims, some questions have been directly repeated. So be on a lookout for those questions and try to strengthen your knowledge base on those topics. Then practice PYQs thoroughly. Try to write answers and rewrite answers on the same questions by analyzing your mistakes in your previous answers. By this way, you can consolidate and strengthen your preparation, and you can get an edge over other candidates. Thank you. Hello everyone, myself Ritu Meena. I have secured All India rank 541 in the UPSC Civil Services Examination 2022. Currently, I am working as a senior tax assistant in the income tax department.
So today I will be talking about how I prepared for UPSC along with the job. तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो मैंने अपनी जर्नी में फॉलो किया और शायद आपको भी वो चीज़ें हेल्प करें। तो बहुत सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टिप्स मैंने फॉलो किए, तो फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैवल होता था फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, तो मेट्रो में आई यूज टू टेक 1.5 आवर्स। तो वो जो आपको टाइम मिलता है, यूज़ दैट, यूटिलाइज इट। तो उसमें मैं अपना करंट अफेयर्स का वीडियोस जो मैं डाउनलोड करके ले जाती थी उसको मैं पढ़ती थी, और मैं करंट अफेयर्स वाला पार्ट इसी तरीके से वापस आते हुए तब भी आपको 1.5 घंटा मिलता है, तो पूरा 1.5 घंटा नहीं, बट आप अच्छे से 2 घंटे आउट ऑफ 3 आवर्स यू कैन यूटिलाइज, उसको अच्छे से यूज़ करिए और उसको मेक इट योर फॉर योर प्रिपरेशन। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ लंच ब्रेक्स। लंच ब्रेक आपको मिलता है लाइक 1 आवर का, तो आधे घंटे में आप अपना खाना खा के यू यूज़ द नेक्स्ट हाफ आवर टू रिवाइज योर थिंग्स। जो भी मैं अपने साथ एक बुक या कोई भी सब्जेक्ट या अपने नोट्स लेके जाइए और उनको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एंड थर्ड थिंग इज़ कि देखिए आपको, आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, तो यूजुअली हमें वीकेंड्स ऑफ मिलते हैं, सैटरडे संडेज ऑफ। उसके अलावा गेजेटेड हॉलीडेज़ मिल गए या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ मिल गए। तो जो भी हॉलीडेज़ आपको मिल रहे हैं, दीज आर योर गोल्डन चांसेस, लाइक गोल्डन डेज। इसमें आप पूरा दिन अपना यूटिलाइज़ कीजिए। बाकी दिन पे और जो भी वीकडेज़ होते थे और जिस पे मैं जॉब जाती थी, तो उस टाइम पे अगर आप यू आर अर्ली राइजर तो आप सुबह का टाइम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप रात को लेट से सोते हैं तो आप वो वाला टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं रात को लेट से सोने वालों में से हूँ, तो आई यूज़ बाद वाला टाइम। तो लाइक 6:30 आई रीच्ड माई होम, थोड़ा सा टाइम ब्रेक के लिए लीजिए, देन उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करी, फिर 1 घंटा आपने ब्रेक लिया, उसमें आपने डिनर भी किया एंड अपना रिफ्रेश भी हो गए, देन नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स की सिटिंग दोबारा। तो इस तरीके से यूजुअली दिन में आप 4 से 5 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। इतना आप करेंगे अलॉन्ग विद वीकेंड जिस पे आपको अपना फुल डे देना है, तो आप आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन जॉब के साथ कर सकते हैं। इसमें साथ में आप कोई कोचिंग अगर लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने किया, आप कुछ ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए अगर फॉलो करना है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आई से कि आप अपना टाइम को मैनेजमेंट करने पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिए, तो यूपीएससी के लिए आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello, my name is Praveen Nigam. I got 443rd rank in CSE 2022. I am already serving in Indian Forest Service 17 batch. One area where I think people might benefit from my inputs would be how to prepare for the exam while being in a job. If you are already in government service, or you're already engaged in a job, it is obviously very difficult to take out time to put in that much effort as you would be doing without a job. Obviously, time management becomes a very crucial thing there, but even before actually executing your plans, what I would suggest is to be very clear about your strategy. First and foremost, one needs to find out what has to be done exactly. There are 10,000 ways of not getting through, and there are very fine-tuned strategy which can help you get through. That strategy will have to be made before you start working hard towards it. So if you are already in a job, your time is very precious, you are constrained in time, so you have to put in quality time. For that, you have to be very sure what exactly one has to do, what exactly one has to work upon. That is the only way you can make your hours count there, and that is also the way how you would be able to maximize your efforts towards increasing your score. So once you have the strategy, once you have for each paper, for each subject, one needs to have very clear what to do, question answered. Once you have that, you would have to make out time to actually work for it. By that I mean, do not sit in the exam. If you have limited attempts, do not sit in the exam till you are very clear with your strategy and you have worked upon it sufficiently. That you would be able to judge by your marks in test series, or by
your attempt would be that way only. You would be able to judge where you stand. So my suggestion would be to be very clear with what to do and to work hard towards it so as to make yourself very ready just before you appear, and you need to make every attempt count. Just don't keep on appearing for the sake of sometimes we think it, as in my case, I thought I only needed some incremental changes because I was missing cutoff by 1 mark, 2 mark that way. So sometimes one gets the impression as if you need some incremental progress, but with deeper introspection you realize that revolutionary kind of overhaul is required in your strategy. So all those factors have to be worked upon prior to your attempt itself. So it's better to have a very clear cut strategy, diagnose your problems, sort those issues out, and before you go to the exam you need to be very confident that you would be able to get into the rank which you are striving for. So that's my suggestion. Hello, my name is Anup Das. I secured All India rank of 38 in the Civil Service Examination 2022. Before this, I was posted as Assistant Commissioner of Income Tax in Delhi with my Indian Revenue Service batch of 2020. In this clip, I will be talking about how to manage preparation with your work. Before starting that, I will tell you that one should gaze into the work profile first and understand whether it is possible or not, because a deep understanding of your work profile is very much needed to make a plan and make an efficient use of your time for the preparation. Once you are done with that, then make a plan of your work. I think one person, if has provided a commitment towards the work, needs to be punctual about it, manage it in a particular time period. Because when I was in revenue service, I had cases coming to me on a regular basis, and I made a proper plan for it and finished them before time so as to save time for my preparation. Secondly, make the best use of whatever time that is available to you. In this regard, I used to do preparation early morning and late in the evening, and also in between the gaps that I get in the office. Meanwhile, I used a very efficient use of my weekend time. And fourthly, a very important aspect that often is missed by the candidate, which I feel is very important, is a smart planning, because hard work is unsubstitutable, but a smart planning is what makes everything doable. So I used to have a very smart plan on a weekly basis so as to make the efficient use of my time. And lastly, when you are working, a very important thing that one needs to know is have friends who are colleagues, who are bosses, who are subordinate in the office, so that they provide you the technical assistance and the work related help whenever needed, and also provide you the motivation that okay, you can manage it and keep you motivated. They keep you pushing forward. I feel if a person is well planned, well balanced, and prepared to do hard work with such preparation, then definitely one can crack civil service examination with working in any post. So therefore, I would suggest everyone to gaze into their work profile and decide before leaving job. And all the very best to the candidates who are aspiring to be a part of civil services. You can definitely do it. Please gaze into yourself and your strengths and weaknesses. You are definitely meant for it. Thank you. Hello everyone, my name is Dimpi Rajora and I have secured All India rank 829 in UPSC Civil Service Examination 2022. I am going to talk about how to prepare for civil services along with your graduation. I am assuming the graduation is of 3 years. So basically what I had done, my graduation was in 2021 and I thoroughly enjoyed my first year. I was exploring college, I was building on my personality, was focusing on my academics. And in the second year, I was involved in many extracurricular activities. And I would suggest this to all of you to also include yourself in extracurricular activities in your college as well as on your academics, because this helps in your personality. And we should also focus on the stage that is personality test in UPSC, which is like the most important stage, the last stage. And
in the final year, I would suggest you should start preparing for UPSC if you are giving prelims in the final year or even after 1 year. So along with your academics, you can focus on the prelims and आप अपने prelims के लिए जो normal standard books है हमारी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स के लिए whatever you feel comfortable in, geography के लिए NCERTs और NCERTs फॉर बिल्डिंग योर बेस, आप इन सारी ही स्टैंडर्ड बुक्स को ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फॉलो कर सकते हैं. एक स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर कोचिंग, एंड दिस 1 year कैन बी इनफ फॉर द UPSC प्रीलिम्स. आप आंसर राइटिंग अगर आपको डाइसी लग रहा है तो आप उसको प्रीलिम्स के बाद भी फोकस कर सकते हैं, but having a strategy and having read all the standard books in your final year along with your academics, because you should not ignore your academics as well, and I guess this should be enough for your preparation for the civil services, and this way you can also work upon your personality on your prelims, on your mains answer writing. And one should not focus on civil services starting from the first year. Enjoy thorough your college life. It won't come again. Build your personality, get involved in as many activities as you can, and give importance to the civil services in your final year. This would be my advice. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Varun Yadav, and I have secured All India rank 596 this time. This was my third attempt, and I have taken the PSIR optional this time. So today I would like to talk about selecting the right optional, because the optional is the game changer in the examination process, and it plays an important role in deciding your rank and in deciding your service and cadre. So firstly, I would tell that earlier in my earlier 2 attempts, I had history optional. Then I switched to PSIR optional in this particular attempt. Firstly, I would also like to give a brief about myself. I have done BA LLB and I graduated in 2020 from Guru Gobind Singh Indraprasth University, Dwarka. Then I did my LLM, and I completed LLM in 2021. During 2020 and 2021, I also gave my UPSC attempts with the history optional. But I was not able to score a good score in optional particularly, because of which I could not clear mains by a little margin. So I would tell that one should do the in-depth analysis of checking in which particular optional the score is particularly good. History is a tough optional, and I would suggest that if someone has no particular background in history, then he or she should not opt for history as such. PSIR I changed in this particular attempt. I took political science and international relations. Comparatively, it was a higher scoring optional. Also, I would say that my knowledge of law background, like constitutional law, and there are some political philosophers we read in our BA LLB, so that helped me. So on that aspect, I would tell that firstly one should have the full faith in the particular subject in which he or she has done the graduation, and if still one person wants that other optional should be taken, then that optional's criteria of marks being awarded, as also the comfortability in that particular optional should be taken into consideration. Secondly, I would also like to tell about the preparation along with the college time, because I prepared along with my college. Like my first attempt was just after I graduated in 2020, and second attempt was during my LLM in 2021. So during the college time, we can make a particular study plan, like we have some 5-6 hours of college. After that, we can manage our study time by devoting a week to a particular subject. I would not say that one should study 7 hours or 8 hours daily, but I would say that one should keep in mind that this particular subject needs to be completed in 7 days or 8 days. Like I had a target, like if I study modern Indian history or polity, I would complete it in 7 days to 10 days. These type of benchmarks should be made, and based on these goals, one should make their study plans if a person is in college. And also the college subjects these days are particularly helpful in the mains and in the UPSC process.
I clearly remember that I had history, I had political science, economics, sociology. These were and constitutional law. These were some of the subjects which I studied during my BA LLB, and these helped me to some extent in my UPSC preparation. So I would suggest that one should take all of these subjects seriously and do well in the UPSC process, because the foundation which one can get in the college level, they can help in the later phases of life and in UPSC particularly, examination process particularly. Through this, I would just like to sum up with my suggestions that optional, it is a game changer, and it decides your rank and your selection in the final merit list. So choose the optional very wisely. And for me, history was a tougher optional. For someone, it might be a good optional. But if one has to take my personal advice, then I would suggest that history, it is tough to score good marks in history, and it takes a lot of time. So the decision is up to you all, because you all are preparing for the prestigious service, and it demands a certain sort of caliber, and you all are wise enough to take the good decisions. So with that, I would like to wish everyone all the best for their future endeavors. Thank you. Hello everyone, my name is Tushar Kumar. This year I scored rank 44 in the UPSC Civil Services examination. This was my 6th attempt. Before that I have given 4 interviews in the past. So I would like to discuss about my journey. It has been long, it has been filled with quite a struggle. And I would like to share my struggle with you so that it can help to shorten your journey. So first of all, the thing is that we need to stress on the fact that so first of all we need to identify the fact that there are a lot of things available in the market. We have a lot of content, we have a lot of resources and sources that are there. What we need is to shorten or limit our resources. And for that, syllabus and previous year's questions are something that is going to help you a lot. Whether it's the GS papers or it's your optional papers, in both these things, you need to focus more on what the syllabus demands and what UPSC is asking in the previous year's question. That will help you a lot in limiting your resources, confining your notes, and preparing more effectively in a more efficient manner. So if I share my strategy, so before this attempt I took a break for the 2021 exam. I relooked my strategy, that where I was faltering, because I have given interviews 4 times and yet I was unable to find my name in the final list. So I took a bold decision to change my optional. It was geography before. This time I took anthropology. There's nothing that there is some fault in geography or it is not giving results. There are many toppers that have aced this exam using geography as the option. I thought that I have given my best and yet I was not able to score the required marks to get a good rank. So, the experience of this past optional did help me to score good in this new optional. Further, my whole strategy for the new optional was around PYQs and syllabus only. I didn't read anything extra. I read the entire syllabus once. I took some lectures, and after that my whole preparation focus was based on the solving the previous year's questions only. Same thing happened with the GS. I was scoring good in GS regularly, but this time I made it more. I made my notes more confined, especially focusing on the syllabus and PYQs. I'm reiterating this thing again and again, that you have to focus on syllabus and the previous year's questions. That is where your boundary will be defined, and you will be able to give maximum result in a much lesser effort that is required. So that would be it from my side. Hope best of luck to all of the aspirant there. If you have the clear motivation to clear this exam, you will definitely do it. You just need to identify the areas where you have to work on, and
accepting that you have failed is nothing wrong. Working on that is what is going to make you succeed in this exam. Thank you. Hello everyone, my name is Manan Agarwal. I have secured All India rank 46 in the UPSC Civil Services exam 2022, and this was my third attempt, and my optional was mathematics. In this video, I would like to give you a brief about my journey and also tell you about how we can improve our mental health during this journey. So friends, in my first attempt, I could reach till the interview stage, but was not recommended. And in the second attempt, I could not even clear prelims. Undoubtedly, this was a huge setback for me at that time, and I even doubted whether I would ever be able to clear this exam or not. I would like to suggest you that this UPSC journey is full of a lot of challenges, full of ups and downs that we may face. However, it is important to maintain a positive attitude and to face these challenges with the right mindset so that we can persist and persevere through the journey and achieve success at the end of our journey. I would like to share how I improved my own attitude during the journey and how I could tackle these ups and downs. Firstly, we need to have self-belief. That is, believe in our own abilities that we can do it. Because we have taken a huge decision to sacrifice other things and go for this preparation, therefore, we must always trust ourselves that we have what it takes to be a good officer. Secondly, it is also important to have a social support system around us. For me, it was my friends and family who regularly motivated me towards this examination. My friends, especially those who were not preparing for UPSC, they used to regularly interact and ensure that my UPSC journey was not a lonely one. Thirdly, I believe it is also important for aspirants to have some kind of hobbies so that we are not always engrossed in studies and also maintain a balanced lifestyle. So even apart from studies, we can do jogging, running, we can engage in sports or read books. For example, I used to read a lot of fiction books apart from studies so that I could maintain a fresh mind and always do studies with a pleasant disposition. Friends, I believe that in the UPSC journey, about 50% of what we achieve is because of our own hard work and of what we study. But about 40 to 50% is also due to our mental health. And this mental health and our state of mind is important, not only during the day of the exam, but also during our preparation journey. Therefore, through the various points I discussed earlier, we can improve our mental health while we are preparing. However, on the day of the exam, it is important that we have a high degree of confidence when we approach the paper. And this is true for all the three stages, the prelims, the mains, and the interview. Only when we have high confidence, we can tackle questions which are difficult. And trust me, friends, questions that are difficult for everyone. Therefore, we need to have the attitude that if I don't know a question, then nobody else knows that question, so that we do not get bogged down by any of the so-called random or unconventional questions and try to solve them with a positive mindset. Therefore, friends, I hope that through my short message, you would be able to improve your mental health during this journey and achieve success at the end. All the very best to all of you, and thank you for watching this. Hello everyone, my name is Jay Barange. I have secured All India rank 587 in UPSC 2022. In this video, I would like to talk about my journey and the process, and how I dealt with the pressure and optional basically. So in my first attempt, I cleared the GS in the prelims, but I was not able to clear CSAT by just a few marks. So that was a very tough moment for me, because like clearing GS and then failing in CSAT, the pain is different. In second attempt, missing by just a few marks. In last attempt, I missed by 0.66 marks. So I was in a situation like, what else can I do to clear the prelims?
what else does this preparation wants from me. So the pressure was very high, and I also had certain personal sufferings at that time. But eventually I trusted myself, on my abilities. I tried to gather all my energy, concepts. I focused on what the prelims is all about. How can I, get to the concepts, the core concepts, the basic understanding of the previous year question papers, the pattern of the questions that are being asked. And successfully, this attempt I was able to clear prelims by a good margin. And in mains also I did well by writing test at my home. As far as optional is concerned, my strategy would be just focus on limited sources, try to revise them as many times as possible. I got 286 marks this time in geography optional, and I believe that the key to geography, as it is very vast, is to have limited sources, revise it as many times as possible, because you won't gather a lot of thing about a same topic when the question comes in the examination. So if you have short notes already prepared, then that will definitely help you in the optional preparation. And mapping is something that can really fetch you good marks. Case studies, examples, anything that you read in the current affair, if you try to jot it down and try to interrelate with maximum topics, like topics of paper 1 can be related to paper 2 examples in paper 1. So this type of creativity in optional is really rewarding, and I wish you all best of luck for your future endeavors. Thank you. Hello everyone, my name is Krishna Chandra Gupta and I secured AIR 142 rank in UPSC 2022, and I am here to share some of the things that I went throughout this journey. आई थिंक ये चीज़ होती है कि सब हर एक स्टोरी में, हर मूवी में एक विलन होता है, और मेरी भी जो ये स्टोरी है उसमें एक विलन था, दैट इज़ आई थिंक मैं खुद। और इस विलन का इसलिए मैं खुद हो गया और मैं ही हीरो था इस स्टोरी में, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जर्नी कैसे ख़त्म करूं और उसका एज ए गुड एंड में ख़त्म करूं। एंड देयरफॉर दिस होल जर्नी एक्सपैंडेड टू 6 years long, and there have been lot of struggles, and मैं वो struggle बता के शायद आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि it would be very small and it would be very insignificant of me if I'll say कि मेरा struggle ज़्यादा था। अगर आप कोई भी serious aspirant है जो UPSC की तैयारी कर रहा है, उन सबको पता होगा कि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा struggle होता है। तो इस वजह से हर इंसान का अपना struggle है और इसीलिए मेरा भी struggle था। But the thing was that आपको अपने हर struggle से कुछ ना कुछ सीखना होगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि और आप निराश मत होइए। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जब आपको ऐसा लगता है कि अब ये हो नहीं सकता, और एवरी डे आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने ये बहुत बड़ी गलती की यूपीएससी का प्रिपरेशन लेके। तो आई थिंक मैं एक काम करता था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। वो ये था, सबसे पहले कि जब भी मैं डाउन फील करता था तो मैं रो लेता था। तो आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम क्राइंग, एंड मैं बहुत जल्दी रो के आराम करके रो के और उसके बाद पढ़ाई पे बैठ जाता था। तो ये एक बहुत रिफ्रेश वाली काम करती थी। सेकेंडली, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ी जर्नी रही, तो आई थिंक समहाउ मैं अगर सिर्फ 2023 का जो प्रीलिम्स है उसको अगर हटा दूं और उससे पहले की कभी भी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि ये प्रीलिम्स निकालना मुझे आ गया था। और प्रीलिम्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कुछ भी मत कीजिए, बेसिक्स जो आपकी बुक्स हैं उनको कंप्लीट कर दीजिए, जैसे कि जो भी बेसिक्स आपको अलग अलग लोगों ने बताई। और उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल 10,000 क्वेश्चंस अराउंड, ये टोटल पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन पेपर्स, डिफरेंट कोचिंग्स के आप लेकर आइए, उनको सॉल्व कीजिए और उनका एक आंसर बैंक बना लीजिए एक डायरी में, एंड यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसा होगा कि आपका जीएस तो निकल जाएगा। और सीसैट की, क्योंकि मैं एक इंजीनियर रहा और दो की इंजीनियर को भी इस बार सीसैट में दिक्कतें आ रही हैं, मैं इतना शायद प्रिपेयर नहीं किया, तो इस वजह से मैं सीसैट के बारे में नहीं बता पाऊंगा। अगेन द होल जर्नी फॉर यूपीएससी के लिए अगर मैं कुछ एडवाइस करना चाहूँगा तो ये करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप मेंटल हेल्थ स्टेबल करके रखेंगे और ये सोच के करेंगे कि नहीं, ये चीज़ एक एग्ज़ाम है और जैसे सब लोग पास करते हैं वैसे ही मैं इस एग्ज़ाम को भी निकालूंगा, तो ये डेफिनेटली एक एग्जाम बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अपनी लाइफ बना लिया और आपने कहा कि इसका फेलियर और सक्सेस जो होगा वो आपके फेलियर और सक्सेस पे निर्भर करता है, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको कहूँगा कि बहुत लोग होंगे इस पूरी जर्नी में जो आप पे क्वेश्चन करेंगे, उस पर
एक बहुत ही फेमस लाइन है, एक बहुत ही फेमस पिक्चर से, जहाँ पे वो बोलता है कि नेवर let somebody else to ruin your dreams. You have to protect your dreams by yourself, and once you protect your dreams will make you a successful person. At the same time, you need to understand that you are the sun, nobody else is the sun, and the world revolves around you. So you have to shine by your own heat. So once you get heated up, and then therefore only the shine will come out. So my sincere advice would be for you to never give up. कई बार चीज़ें खराब हो जाएंगी, बट ये याद रखिए कि जैसे मेरे लिए आज ये दिन आया और मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ, वैसे आपके पास भी ये दिन ज़रूर आएगा. थैंक यू सो मच. So hi everybody. My name is Gunjita Agrawal. I have achieved All India Rank 26 in UPSC CSE 2022. So the numbers here and the years here are very relevant for me. I have separated these 3 years separately. I have kept this year different and this year different. Reason being, 2018 was the year when I graduated from my college, and that year I gave an attempt not knowing what actually I am going into, not knowing what I have to prepare, and not being very much aware about the syllabus. So what I did, like a lot of us do during our first attempts, was just read some basic books, just understand some stuff and expect that I would make it. But I failed. I failed with a very big margin. From what I remember, I think I failed by some around 15 to 20 marks that year. But I got that I am not going in the right direction. So what I did next? Was I started preparing for 2019, and I started preparing very sincerely, because I had thought, like I had sat down with my family and I had thought, and internally also I was motivated that if I want to do this and if I want to join the government service, I want to give myself proper justified attempts and years to be able to clear it. Of course, जब हम starting में सोचते हैं कि preparation start करेंगे, तो we don't think that I or any of you will have to reach down till here. We all wish कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो यहाँ तो हो ही जाएगा. But for me, all of these years were failures. Till here, this was a failure. I don't count this as a serious preparation because I had not put in a lot of efforts. But these 3 years, I was ticking all the boxes according to myself. I was studying very sincerely. I did not go for any alternative. I was doing all the answer writing that was supposed to do. But every year, I was seeing a failure. Every year when the result would come, I would not have made it to prelims. I remember 2019, I think I missed by 0.66, which was demotivating and motivating as well. Demotivating because you're missing by such a small margin, but motivating because you've just missed by that margin and you hope that maybe next year you'll clear it. But the story remained the same. 2020, 2021, both the prelims I could not make it, and I was missing the GS part. CSAT I was able to clear because I had commerce with maths in my background and I was able to solve English comprehensives really well. So I was able to clear CSAT every year, but GS I was missing by 1 or 2 questions. Now, a lot of you might think that this journey is easy as it sounds, but during these 2 attempts specifically, 2020 and 2021, I did not know what to do. So after every prelims failure, I would think that first question would be, am I giving the next attempt? And the second question would be, if I am giving the next attempt and if I have given all of it in my previous attempt, what different am I going to do? So I would sit down these questions every year and I would try to analyze what I have done wrong, but what I have done right. But I would say one mistake throughout these 3 attempts for prelims specifically, because I was reading everything right, but what I was not doing is I was maybe missing out on analyzing what are my strengths and what are my weaknesses, because after failing that prelims and we get the mark sheet next year, so I would never properly sit down with my marks and understand where am I going wrong. So this year, like 2021 and 2022, I changed this. I sat down with my answer copy specifically for prelims. I would see the answer key. I would try to understand which sections are my strength. I understood that I enjoy reading modern history, I enjoy reading polity, and those are my strength areas. Maybe science and technology is not something which I would score a very high on. So I started analyzing this
trend and I started focusing on the subjects that I was supposed to read better. So in 2022, what I did was I also started looking out for alternatives. I started giving examinations for other subjects for other schools, and I got into Indian School of Public Policy, and I decided that I would do that. So alongside that only I was preparing for 2022. But what I did was just the basics. I stuck to the basic books. I stuck to the current affairs which I knew, and a lot of time was spent analyzing the previous year questions, and a lot of time was spent analyzing every mock paper that I was giving. In the earlier years, what I would do is I would just give out a mock paper, see my marks. Usually it would be on the good side because I got accustomed to how mocks can be aced. I was not getting accustomed to how UPSC prelims can be aced, but I was getting accustomed to every year by giving the same paper how UPSC like coaching mocks can be aced. So I was getting good scores there. So I would end up not analyzing them really well. But these years I sat down, I understood like what is going right for me, what is not going right for me. I purchased a previous year question book and I read through all the previous year questions. I solved them, I understood them. And this year the change that I made, because everybody has been asking what is the change that I made. So the change was sticking to the basics and reading the same sources again, but this year with confidence. And second change was the attitude in the examination hall. In all these 4 years, when I went to that examination hall, a lot of burden was there on me that if I don't make it, my life gets shattered in a way, because I don't have any alternative, I don't have any plan B, and I didn't feel like doing anything else. But this year, my attitude in the examination hall was very calm. I was very patient. I was seeing every question by its own merit. I understood what the question wanted and I attempted accordingly. I did not hurry into the process कि मुझे ये reading इतने minute में लेनी है, ये करना है. Of course, all of us have that. I also had that. I have to do around like one reading by 50. But if it didn't happen in 50 minutes, I was not very like surprised, or I would not go very paranoid that why it didn't happen. Rather, I would take that 60 minutes, sit down and complete that one reading honestly and perform better. So the attitudinal change was on the day of the examination, on the day of those 2 hours, because those 2 hours, how you're performing under pressure, because with every attempt the pressure increases, and with every attempt the expectations that you have with yourself and the others that have with you also increase. But for me in 2022, my expectations, I didn't have any with myself. I just thought that I'm going there in those 2 hours, whatever I know my best, I will perform. And I did perform and I got a good score. I scored 108 in prelims this year, which helped me reach the second stage, which was mains, which I was waiting for, by the way, since 2-3 years. So my advice to everybody who has not cleared prelims in a row, which is a lot of us, please don't get demotivated after not clearing prelims, because it's not you, it's not that you are not making the effort, you are making the effort, but just things are not going right, or maybe you're missing out on something. Maybe it could be the day, the examination day, where you're not performing well. So focus on that attitudinal change that you might want to bring in your preparation. So the second thing would be, please don't stop answer writing, because I got a chance this year to write mains and I was able to convert it even while doing my college. I was managing both of them because I had a base, because I had my notes ready. So every time you're failing prelims or every time you're not able to do it, just start preparing your mains, just start preparing your optional again, because if you're clear that you want to give it next year, all of that hard work, all of those notes will reap fruit for you. I was able to score well in my optional even after studying less in between prelims and mains, because I had notes prepared. And as soon as I picked up those notes, even at the last moment, I was able to recall, I was able to get my tricks for answer writing. So just keep doing answer writing. Just stay motivated and don't think that if prelims nahi hua to exam hi nahi hua, because prelims hoga. Or
अच्छे से जब भी प्रीलिम्स हुआ तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इन दैट मेंस अटेम्प्ट यू आर गिविंग योर बेस्ट. ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, बट वही है, अपॉर्चुनिटी के लिए वी हैव टू बी रेडी, एंड व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी कम्स आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू ace it and get a good score. So all the best to everyone. I hope you all get what you're looking for. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसकरण है. मैंने इस बार यूपीएससी में 595 रैंक छोड़ो दोबारा इस बार यूपीएससी में 595 रैंक हासिल किया है ना. और मैं कुछ टिप्स आपके साथ है ना, कुछ टिप्स आपके साथ है ना शेयर करना चाहूँगा. कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपकी प्रेपरेशन में आपको हेल्प करेंगे. पहले हम बात करेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे, है ना. कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. क्योंकि हार्ड वर्क की ज़रूरत हमें पड़ती है ड्यूरिंग कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान काफ़ी परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, है ना. और उसके अलावा हमें काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बी इट लिविंग फैमिली फंक्शंस और बी इट लिविंग आवर बर्थडेज, है ना. लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट होना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है. क्योंकि स्मार्टनेस ऑलवेज वर्क्स. क्यों स्मार्ट होना ज़रूरी है ना, स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है. हम एक गाइडेड फॉर्म में मतलब अगर हम एक डिफाइंड पाथ पे चलेंगे तो हम अपनी जर्नी को मोर रेगुलेट कर सकते हैं टू मीट द है ना रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी. गधा मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है. हासिल हासिल हासिल. चलिए सर. अरे मैंने कभी बोला नहीं है यार, तो काफ़ी दिक्कत होती है, सीखना है बोलना. शुरू करूँ? स्टार्ट कर दीजिए आप. पिछले वाला डिलीट कर देना, ठीक है. ठीक है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसकरण सिंह है. इस बार यूपीएससी की परीक्षा में मुझे 595 रैंक हासिल हुआ है और मैं अपनी प्रेपरेशन के कुछ टिप्स आपको साझा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपकी प्रेपरेशन में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे. तो पहले हम बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की. कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी में हार्ड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, नो डाउट जर्नी स्टार्ट करना भी मुश्किल है, बट जर्नी में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इसके लिए हमें हार्ड वर्क चाहिए, हमें सेक्रीफाइसेस करनी होती हैं, हमें रोज़ डिसिप्लिन में रहना होता है और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. सो टू कंप्लीट द सिलेबस हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके अलावा हमें अपनी जर्नी को काफ़ी डिफ़ाइन करना होता है. इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क भी चाहिए. जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में अगर हम कुछ टिप्स का ध्यान रखते हैं तो स्ट्रेटेजिकली वी कैन गेट गुड स्कोर्स इन अ वेरी लेस टाइम. जैसे कि हम पहले जो 4-5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करें. सेकंड है कि हम PYQs को अच्छे से एनालाइज करें. थर्ड है कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें ताकि हम वो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में वो 100 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. और फोर्थ है कि हमारा एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए ताकि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस को गैस करना पड़े तो हम उसको अच्छे से गैस करें और उनका कट है ना लास्ट लाइन, और ताकि हम अच्छे से उनके आंसर तक पहुंच पाएँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. PYQ थी उसके ऊपर. अच्छा. और इसी तरह अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के टाइम पे भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे कि वो 3 महीने का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना सिलेबस उससे पहले ही कंप्लीट कर लें ताकि वो 3 महीने के वक्फे के दौरान हम अच्छे से लिख पाएँ. मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कभी भी पढ़ते बहुत रहते हैं लेकिन कभी भी आंसर राइटिंग नहीं करते हैं. तो अगर हम आंसर नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अच्छे नंबर कभी भी नहीं ले सकते हैं. तो पहला है मेंस का कि हमें अच्छे से अच्छा लिखना चाहिए.
सेकंड है कि हमें अपनी प्रेपरेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए. गुड राइटिंग एंड गुड प्रेजेंटेशन मेक्स योर आंसर आउटस्टैंडिंग. और तीसरा है कि जो PYQs की थीम्स हैं हमें उनको एनालाइज करना चाहिए और उसी पैटर्न पे आगे की पढ़ाई को भी चैनलाइज करना चाहिए. और फोर्थ है कि जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक द ऑप्शनल, लाइक द एसे और एथिक्स है, हम उन पे अगर ज़्यादा फोकस करें तो हम कम मेहनत में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे Hello everyone, my name is Bhumi. I have secured All India rank 304 in UPSC CSE 2022 and today I'll be talking about my strategy for prelims as well as my optional that was zoology. So for prelims, it is well known now that the uncertainty levels of this exam have increased tremendously and for that one needs to be prepared very well. So for prelims my strategy was to do as many revisions as possible and to attempt as many mock tests as possible, and these mocks I believe should be full length tests which would prepare you to holistically think on your feet during the examination. Now since prelims has become very vast, it is important that your knowledge base is equally vast. So for that, beyond the standard books that everyone suggests, one needs to be prepared very well with the current affairs, and moreover when you are done with the baseline syllabus, one needs to also work on their guesswork. This guesswork has to be very calculated and based on your knowledge and not on any kind of fluke. So for that, many mock tests and analysis of those mock tests is very important. If you get a hang of this exam by practicing previous year papers, that would be very helpful, because not questions but themes are definitely repeated in UPSC. So if we go subject wise, then for history, the common sources are known. What I followed is Spectrum for modern India and the new NCRTs for ancient and medieval India. Many people suggest old NCRTs as well as Tamil Nadu boards as well. So if you have time, you can consider these sources. But if time is a constraint, then I think the resources of new NCRT as well as Spectrum should suffice. Second is polity, and the standard source that I followed was Lakshmikant. But Bare Act is very important because the questions in prelims now come directly from the Constitution. They want you to know the text of the Constitution, and that is very well expected of a civil servant. So for that, Bare Act and Lakshmikant is what I followed. For economy, I mostly relied on current affairs and the newspaper, especially newspaper. For environment, also I relied on current affairs. For art and culture, I referred to the NCRT of fine arts and Nitin Singhania. So these are the standard sources that I followed. For current affairs, I would recommend religiously reading the Hindu and following any material on current affairs, any monthly magazine that you would like. But what is important in prelims in these uncertain times is that you have confidence on your own abilities during the paper, and handling pressure is very important for that, and that confidence comes from practice, and that practice can come from full length tests. Second thing I would like to talk on is zoology, which is a very unpopular optional, and the guidance is very limited in that. So since my background was zoology, that is why I took the subject, and the resources I followed were standard books, and for paper 1 I followed Kotpal for classification, and for paper 2 I followed a variety of books, and internet was a main source in both of these. I made my own notes for both the papers, and thorough revision for both is what I did. For diagrams, I would suggest that you make a separate separate notes for diagrams, for quick diagrams, because diagrams are very crucial in zoology. They will fetch you a lot of marks. So this was my strategy for zoology. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma from Chandigarh. I have secured All India rank 70 in my first attempt in UPSC CSE 2022. So I'll want to share a couple of things with you. कि first, don't overly rely on anyone कि यार ये मुझे mentor करेंगे और ये मुझे सब कुछ बताएंगे, है ना? Then I will follow वही वाला. Because everybody has their own unique strategy. आप खुद से previous years को analyze करें, toppers की copies को देखें, उनसे ideas लें और फिर अपने हिसाब से करें. एक लेवल एक चीज़ होती है, दूसरी की नॉलेज लेवल कितना है. एक नॉलेज लेवल बेसलाइन जब आपने मेंटेन कर लिया, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आंसर राइटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप ट्राई करो कि अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. तीसरा है कि एंजाइटी और थोड़ा सा डिप्रेशन हर फेज पे रहता है प्रिपरेशन के, तो आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो. डोंट रिमेन आइसोलेटेड इन अ ककून, और उस हिसाब से आप प्रोसीड करो. So this is all I would like to say. And another thing,
कि अपने रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन करें, कि अगर आपके पास 3-4 सोर्सेज हैं, आप हर तरफ से मत पढ़ो, ट्राई टू कंसोलिडेट देम इन वन प्लेस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एंड में क्विक रिवीजन ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है. तो आई वुड रिकमेंड दैट. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट. हाय, मेरा नाम पीयूष कुमार है. मैंने इस साल 433 रैंक हासिल की है सिविल सेवा परीक्षा 2022 में. ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था. मैं बोलना चाहूँगा मोटिवेशन फैक्टर में, कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें इस जर्नी में. काफ़ी लॉन्ग जर्नी हो जाती है कई बार, लेकिन आपको ये जर्नी को ये सोच के नहीं आना है कि ये लंबी जर्नी है. आपको पहले सोचना है कि पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही मुझे क्लियर करना है, तभी आप मोटिवेटेड रहोगे. आप सीनियर से बात करो, आप सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करो, आपको वो लोग मोटिवेट करेंगे. थोड़ा उन लोगों से दूर रहो जो बोलते हैं कि ये सिर्फ IITians निकालते हैं, ये सिर्फ जो बहुत अच्छे होते हैं 10th 12th में वही निकाल पाते हैं. ये एक मिथ है. अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे, साल भर पढ़ाई करोगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा. तो आपको मोटिवेशन फैक्टर हमारे जैसे लोग होने चाहिए जो चौथे अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल बैकग्राउंड. तो मैंने पहला अटेम्प्ट जब दिया था तो मेरा इंटरव्यू कॉल आया था. मुझे लगा UPSC थोड़ा इजी है, इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाता है. तो उस समय मैं थोड़ा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स शायद मेरे अंदर हो गया था. बट UPSC हम्बल बना देता है आपको इस जर्नी में. फिर भी मैं मोटिवेटेड था कि थोड़े से ही से रह जा रहा हूँ. तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया जिसमें PSIR में ड्रास्टिकली लो मार्क्स मिले मुझे. फिर तीसरा अटेम्प्ट में मुझे मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ. तो फिर भी मुझे हमेशा से लगता था, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ का यहाँ पे फैक्टर आता है कि हमेशा से लगता था कि कुछ मिसिंग है, कर लूँगा मैं. तो अगर आप ये एटीट्यूड से जाते हो कि आप UPSC को मत बुरा भला बोलो, आप अपने में कमियां ढूंढो और उसको इम्प्रूव करो. आपके हाथ में वही है. तो बाकी स्ट्रैटेजीज तो टॉपर की बहुत सारी हैं. अब मैं एक बुक लिस्ट देना नहीं चाहूँगा, वो इंटरनेट पे बहुत है. बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बुक आपने डिसाइड की है उस पर स्टिक रहो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, अपने नोट्स बनाओ मेंस के. मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाए वो आज भी मैं यूज़ करता हूँ. शायद अगला अटेम्प्ट दूंगा तब भी मैं वही यूज़ करूँगा. बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो. ऐसा मत करिए कि आप न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन्स के पीछे भागे जा रहे हो. वो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं. जो प्रीवियस ईयर हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उस पर डायरेक्टली रिपीट होते हैं. तो आपको करने की क्या ज़रूरत है कि एक जगह से कहीं से करंट अफेयर्स फॉलो करते रहो. और जो आपका स्टैटिक नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. सिलेबस के टॉपिक वाइज आप गूगल करके, आप किसी कोचिंग के मैगजीन से उठा के अपने नोट्स, एक स्टैटिक नोट्स बना दो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में. और फिर उसी को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो. अपने भरोसा रखो कि आज नहीं तो कल हमारा हो जाएगा. और बहुत अच्छी फीलिंग होती है सिलेक्शन के बाद. तो इससे आप मोटिवेटेड रहो. और मैं बस इतना बोलना चाहूँगा. थैंक यू KSG, आपने मुझे यहाँ बुलाया. और सर का बहुत अच्छा रोल था इंटरव्यू प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे शामिल था. धन्यवाद. Hello everyone, I am Priyanka Goyal and I have secured All India rank 369. And the best part of my journey is that this was my last attempt, so I am going to talk about that only. See, generally the aspirants have a perception that it is very difficult to clear in the last attempt, and also it is really difficult to carry on to this stage. तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स थे. ऑल्सो बीइंग अ गर्ल हमें अदर बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. बट मेरा जो आपसे एक बात करने का एक मेजर टॉपिक है वो यही है कि प्लीज़ हैव दैट सेल्फ फेथ इन योर सेल्फ, प्लीज़ कीप द होप. आप अपनी बोलते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है. अगर आप वो उम्मीद रखेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा. मेरे केस में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे. उनका एक बहुत ही मुझे एक सपोर्ट था कि मैं ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगी. उसके साथ साथ मैंने खुद पर भी हमेशा ये विश्वास बना के रखा. ऑल्दो मुझे बहुत से सेटबैक्स बीच में मिले, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जर्नी बहुत ईजी रही मेरे लिए या ये ईजी होती है. सबकी अपनी एक स्टोरी होती है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है. एंड डेफिनेटली दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी स्ट्रगलिंग. लेकिन हमें हर एक सेटबैक के बाद खुद को ये यकीन दिलाना होता है
कि हम इसके अंदर ज़रूर कर सकते हैं, और ऐसे उम्मीद रखने वालों की या हिम्मत ना हारने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्लीज़ आप खुद के ऊपर वो विश्वास रखें और थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को, थोड़ा सा उसको अपना राइट ट्रैक पे लेके चलें। जैसे मैंने जितने भी मेरे अटेम्प्ट्स रहे और उनमें जो मेरी गलती रही, उनसे मैंने हर बार सीखा, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में हमें पता लगता है कि हमारी कोई कमी रही है। उन्हीं शॉर्टकमिंग्स के ऊपर मैंने काम किया और इसीलिए फाइनल में जाकर मुझे ये रैंक मिली है। फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है और आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ सिविल सर्वेंट। बट इसका सबसे मेजर रीज़न जो रहा, फिर भी मैं कहूँगी, दैट वाज दी होप विच केप्ट मी पुशिंग टू दिस स्टेज, and so please maintain the hope in yourself and in your journey. Thank you so much. Hello everyone, I am Himanshu Mangal. I have secured a rank 288 in this year UPSC CSE 2022. So I would like to speak on two things since the KSG Institute has given me an opportunity to be here and speak in front of you. So दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो इंटरव्यू हो गया जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, और एक हो गया ऐसे, बिकॉज वी हैव सीन हाउ एसेज हैव बीन मेजर्ड इन द पास्ट 2 years. तो पहले तो मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा। आई हैड गिवन इंटरव्यू इन 2021 as well as 2022. In 2021 I had scored 162 and this year my score was 190. So I think this is a phenomenal increase. तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि how I was able to make such a jump in my interview score. So last year when I had gone for the interview, I had gone with a certain expectation that I want to prove myself in front of the world. I want to show them that I am capable of being there in the services and serve the country. But so this creates some sort of pressure on our mind. We start judging our questions, we start judging our answers in the interview room itself. So it creates unnecessary pressure. But what I realized this time was कि I would not go with any preconceived notions. I went there just to have a conversation. What happens is when there are 4 or 5 people sitting in front of us, then we are not able to be ourselves. So my aim this year was कि how I can be myself, how I can speak slowly, so that it gives me time to think. So what happened this time was, I went there, I just had a normal conversation. I didn't want to prove anything to them. I just wanted to have a conversation. I just wanted to be myself, and I think this worked like a charm in my favor this year. So because of that I saw a huge jump in the score. And also whenever I was not knowing answers to any questions, so I was very so there was no sort of urgency in my mind ki why I could not answer that question. So it shows a little bit of confidence on your face, and I think that matters a lot in the final marks. So first is that, and second is for the essay. So what happened in terms of essay is since 2020, like the variation in essay marks used to be around 115 to 150. So it was a very short range. But what has happened in 2021 and 22 is कि some people are getting around 60-70 and some are getting 150 plus. So this is a huge variation. Some people are making into the list and the top ranks just because of the essay, and some people are being left out just because of the essay. So I believe why this is happening is because the essays are being asked on very abstract topics, very philosophical topics. So there is no fixed interpretation of those essays, of those lines which are given in the essay paper. So what should the approach be going forward? We should see what can be the connected topics related to the topics which are already asked in 2021 and 2022. So these abstract topics should be searched on the internet, and then interpretation should be done by the aspirants, like what is their interpretation, and then the actual interpretation should be sought from the internet. So if there is a correct interpretation, if you are making the interpretation correct, I believe that 70 to 80% of your task in the essay is done. Rest of the part comes for flow, the structuring, and how you go about it, how you introduce, and how you conclude. So I believe essay in the essay, this exercise must be done. Like you should have 200 to 300 quotes, and you should try to interpret them on your own, and then you should try that the interpretation should be correct. And one more thing I would like to say is ki, see, UPSC is not like all the other exams. In all the other exams, if you work hard, you will make it. Someday or the other, you will make it. But in UPSC, it doesn't work like that. Apart from hard work, smart work, dedication, perseverance, you need a lot of luck as well. I'm sitting here, I'm being able to speak because certain things worked in my favor. Last year, they did not work in my favor, and that's why I was out of the list. But this time they worked, and that's why I'm here. So you should keep hustling, you should work hard,
and at the same time you should somehow pray that the stars turn out in your favor so that you can finally make it to the list. And the nature of the exam is such that only 933 people will be selected out of 6 lakh people, so the rest will be left out and we cannot do anything about it. So what we can do is we can work hard and we can just be honest with ourselves, and I would like to wish you all the best. Thank you. Hello everyone, my name is Neepa Manocha. I secured rank 144 in UPSC CSE 2022. So this was my 5th attempt and second interview. In my first attempt, I couldn't clear prelims, and the same goes for my second attempt. In my third attempt, I cleared prelims, I cleared mains, and I was given an interview call. But I missed the final list by 9 marks. After that, in my fourth attempt, I could not clear prelims, and this was my 5th attempt. I've gotten rank 144. In this video, I will tell you about how to clear prelims, and since my optional was commerce and accountancy, you can also know how to get good marks in commerce and accountancy optional. So, in my prelim strategy, I relied basically on government data, that is the PIBs and government report, the Niti Aayog reports. I gave a lot of mock tests. So, I also had a fear of failure when I couldn't clear my 2 attempts. So, for all those who are facing this kind of fear of failure, please know that this fear of failure is more harmful than failure itself. Just go for it. And I would like to tell you that in my 5th attempt, I cleared prelims with about 20 plus marks from cutoff. So you need to have that confidence, and for that confidence, you can give as many number of mock tests as you'd like. Apart from that, in mains strategy, I would particularly like to focus on GS3. So, for example, this time UPSC has scaled down a lot of marks in GS3. So, how can you prepare Indian economy per se? If for Indian economy, you also need to focus on government data. For example, RBI releases its report every quarter, so you can go through that. And also the world trends that are going on in the world economy, they will help you to guide answers related to GS3. Also, for example, unfortunately, we've seen that in the recent past, there was an accident in Odisha related to the railways. So, a probable question like what are the challenges that the railway faces can come in this mains. So, you need to have a holistic view on how to prepare for GS3. Apart from that, you can also brainstorm essays and ethics answers. So, creating interlinkages in this exam helps. Also, apart from this, I'll like to speak on the commerce and accountancy optional. So, my optional was commerce and accountancy, and I gave 2 mains with that. In both the mains, I secured highest marks in commerce and accountancy. For commerce and accountancy also, you need to focus more on practical issues and numericals in paper 1. In paper 2, you need to connect the organization and organization behavior theories with real life examples. So that would give you an extra edge over the competitors. So I hope all of you can take back home some of the keen insights from this, and that's it. All the best for your examinations. Hello, my name is Bhanupriya Gurjar and I have secured All India rank 531. This is my 3rd attempt and my optional for this year is sociology. So I would like to talk about the things which an aspirant has to take in mind before starting the UPSC preparation. The first thing is that syllabus. So often what happens is people don't look at the syllabus. So the first thing that one has to do is to look at the syllabus. We have to internalize that syllabus. The second tip would be go
through the previous year question paper for both the prelims as well as for the mains and try to solve them. Look for the themes on which UPSC specifically focuses on. Then the third thing that I would want to talk about is the mains answer writing. So do not start writing answer immediately after your preparation. Just have some basic understanding of your syllabus first. Read throughout the syllabus and then start for the answer writing things. Then the fourth thing would be value addition. So for the mains, a lot of value addition has to be done in terms of committee's name or Supreme Court judgment. So things like that. Do small little value addition wherever you can. So these would be my some tips for all the people who are just going to start the UPSC preparation, and all the very best to everyone. Hello everyone, this is Akshat Kumar Singh, All India Rank 428 in Civil Services Examination 2022. And today I'll be talking about how to develop self-control in this preparation. See, I would say as we are all humans and we have different hobbies and different interests, and these can be at times helpful in our preparation, but they can also be distracting to an extent that they hamper our studies and they hamper our study hours. So what I used to do was, first of all, my hobbies were playing fingerstyle guitar, and I was an avid social media user on Instagram, YouTube and other things. So in the beginning I would say that it did hamper my preparation, and it did led to me getting distracted and me focusing on these things more rather than on my studies. So I would say ki what will help you develop the self-control is a proper timetable and a strict schedule. See, what I did was I had planned that on a particular day I will at least study for minimum 10 hours, and I would like to stretch it for 12 hours if it happens. So what I used to do was I allotted a particular hour in a day which I would be focusing on my hobbies or other things which I like to do. For example, as I played fingerstyle guitar, I started playing this just before sleeping, so that it helped me reduce my screen time as well as I can pursue my hobby as well. Also, I had a fixed time in my day when I'll be talking to my friends, both offline as well as online or through call. So what it helped me do was, first of all, it limited my time to a particular extent. For example, I talk to my friends from 5 to 6 p.m. in a day. So I'll be done with the call nearby 6, so that I'll be back to my studies after 6. उसके बाद whenever I used to whenever suppose my friend called me on 7 p.m. या 8 p.m. I would just message him or her that see, I'll talk to you on another time. I'm currently studying. So this helped me reduce my distractions and also helped me focus more on my studies when I was studying. As they say, work hard and play harder. I followed this only, and I think this helped me reduce these distractions and help me develop this self-control, which I think is very important for this examination. Hello everyone, I am Pranjal Jain. I have secured All India Rank 335 in UPSC CSE 2022. मेरा कॉमर्स ऑप्शनल था, एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि हमें ऑप्शनल क्या रखना है. कॉमर्स ऑप्शनल रखना है, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए जाना है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कॉमर्स ऑप्शनल इज़ अ रियली गुड ऑप्शनल, और आप इसको ले सकते हैं. इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग ऑप्शनल इंडीड. और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही जिससे मैंने इसको यूज़ किया और मेरे 275 मार्क्स इसमें आए. So commerce and accountancy optional में, as we know, there are two papers, paper 1 and paper 2. So paper 1 में there are 4 subjects. Let's see. In paper 1, primarily, we have to study about financial accounting, cost accounting, taxation, and auditing. सो जो ये पेपर 1 का लेवल होता है, दैट इज़ ऑफ आवर ग्रेजुएशन लेवल, जो हम BCom ऑनर्स में पढ़ते हैं, या आपने जो भी कॉमर्स किया, किसी भी हमने ग्रेजुएशन में करी है, या फिर CA या CS के जो इंटरमीडिएट लेवल है, पेपर 1 का लेवल वही रहता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिकली जो क्वेश्चंस अगर आप पास्ट ईयर पेपर से देखेंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर यू टू डू. व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट अकाउंटिंग, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब करने की बात आती है, सो यू हैव टू मेजरली फोकस अपॉन द थ्योरेटिकल पार्ट as well as the portions relating to standard costing and marginal costing. When it comes to taxation, अभी तक अगर आप पिछले 5 साल में देखें, आफ्टर GST implementation, UPSC का फोकस रहा है ज़्यादा ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस पार्ट.
डायरेक्ट टैक्सेस में यानी कि इनकम टैक्सेस में। सो या तो वो पूछ रहे हैं कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स और कॉर्पोरेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर वो इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में पूछ चले जाएंगे कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, डीम्ड ओनरशिप्स क्या होती हैं, या फिर क्लबिंग के सेक्शंस में चले जाएंगे। ऑडिटिंग की अगर हम बात करें, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो बेसिक पार्ट्स हैं ऑडिटिंग के, कि अगर हम बात करें ऑडिट ऑफ एन एनपीओ, ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके क्या प्रोसेस रहेंगे। सो अगर आप उसको प्रॉपरली तैयार कर लें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सो यू कैन ईजिली हैंडल पेपर 1। सो आई विल से दैट जो इसकी ये वाली नॉलेज है, यू कैन हैंडल इट विद योर प्रायर नॉलेज जो आपने अपने कॉमर्स के लिए पढ़ी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 के यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ ट्रिकी हो जाती है, जहाँ पे एस्पिरेंट्स फंसते हैं, क्योंकि जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं दे आर अ बिट हायर देन व्हाट वी आर यूज्ड टू स्टडी इन द ग्रेजुएशन लेवल एंड इवन इन द सीए कोर्स। सो जो पेपर 2 के 4 सब्जेक्ट्स हैं दे आर HRM, second is IR Industrial Relations, third OT and fourth OB। जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं ये मास्टर्स लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, यूजुअली हम MBA या MCOM में पढ़ते हैं। अब नाउ व्हेन द क्वेश्चन कम्स कि हमें ये वाले सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करने हैं, सो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। HRM एंड IR के लिए यू कैन रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट में चलती हैं। OT एंड OB के लिए यू कैन रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स एंड यू कैन ऑगमेंट देम विद द एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ द टॉपर्स, या फिर जिन्होंने कोई अपने नोट्स या स्ट्रैटेजी मटेरियल शेयर करें। साथ ही साथ जो इसके लिए आप रैंकर्स के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, दैट वाज आल्सो टू ऑगमेंट योर प्रिपरेशन। बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स ऑप्शनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस ऑप्शनल इज गोइंग टू डिसाइड माई सक्सेस इन UPSC। लेट मी टेल यू दैट कॉमर्स पेपर 1 एंड पेपर 2, इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट, पेपर 1 आपका 75% रेडी ऑलरेडी हो गया, पेपर 2 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। बट इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड देन यू आर गोइंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उसके लिए आपको पेपर 1 ही पूरा का पूरा इनिशियली पढ़ना पड़ता है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं दे रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। हम अगर बात करते हैं कि जो कॉमर्स ऑप्शनल है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर GS प्रिपरेशन एंड दैट इज ट्रू अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट अगर हम बात करें कि ऑप्शनल लाइक ज्योग्राफी, ऑप्शनल लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, yes, there is no doubt that they will help you in your GS mains preparation, but there is a certain flaw in that, because you have to prepare in very depth of that particular subject, and इतना डेप्थ आपके GS में भी काम नहीं आता। और अगर आप आजकल के करंट प्रिपरेशन स्टाइल्स देखेंगे या फिर जो करंट UPSC पैटर्न देखेंगे, उसमें भी यू डो नॉट हैव टू बी अ स्पेशलाइज्ड और अ स्पेशलिस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर GS हम ज्योग्राफी की बात करें, लेट्स से यू आर अ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट और आपने सब पढ़ लिया, लेकिन GS में अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं टॉकिंग अबाउट हीट डोम, टॉकिंग अबाउट मेंटल ब्लूम्स, so you will not be able to answer that particular question in less than 7 minutes until and unless you give a very generalist approach. अगर आप बहुत specialist approach दे रहे हैं तो it's not gonna work for you, but that's up to you. The main call is that if you're a commerce student or you have already studied paper 1 up to a certain level, then you can go for a commerce optional. However, if you are going for other optionals which are indeed very scoring, but the amount of effort that you have to undertake is again a lot more than what you have to undertake if you are a commerce optional student. So that's it for now. If you have any other queries relating to GS, optional commerce, do let me know, and it's really great to interact with you. Thank you so much. My name is Dr. Komal Agarwal and I have secured All India rank 303rd in UPSC CSE 2022. So here I am going to share with you all the how to prepare for social justice and social issues topic. Bilingual हो सकता है? Okay, sorry. तो सबसे पहले तो पेपर से शुरुआत कर सकते हैं. You should read newspapers and you should know what social issues are in the news. And then you can look at whatever the material that you are reading and try to connect the current and the static with it. And also do not forget the previous year questions. They are the key to the question paper maker's mind, because then only you will know how the questions are asked and what you have to write down on the paper to suffice that.
So सबसे पहले if you are reading a newspaper and you get to know something like dowry and honor killings, that is related to social issues also. So paper 1 comes into play and you should know कि किस portion of syllabus से you have to connect that. So after that you will read the social issues material and you can see how it is connected to the syllabus, and then practice a question or two on it. If there are no questions asked previously, then it's a great thing, it might come up in the future. So maybe take some mock questions and write the answers down and see if you are there, and also get your copies evaluated, because only then you will know कि आप जो लिख रहे हैं is that asked or not, because everyone writes best answers in their capacity, but is it the best among all, that you'll have to know only, that you'll get to know only after you'll get them evaluated. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं मेरी जर्नी से मेरे फेलो एस्पिरेंट्स को जो एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये कि मेरा जो 6th अटैम्प्ट है इसमें क्लियर हुआ है, यूपीएससी सेकंड इंटरव्यू था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जो मैंने मिस्टेक करी वो एक फ्यूचर एस्पिरेंट ना करे, जिससे उनकी जर्नी शॉर्ट हो सके और वो बहुत जल्दी गोल इतना अचीव कर सके। पहली चीज़ है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको बहुत शॉर्ट में रखिए, मल्टीपल रिसोर्स पे ना जाके लिमिटेड सोर्सेज को ध्यान दीजिए और उसको मल्टीपल रिविजन्स पे ध्यान दिया जाए, जिससे वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर मैनर, और जो क्लैरिटी आएगी वो क्लैरिटी आपको एग्जाम्स में बहुत फ्रूटफुल रहेगी, स्पेशली इन मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। देन सेकेंड थिंग है कि आप जो टाइम स्लॉट्स बना रहे हैं उसको, मतलब किसी भी बुक को अगर आपको रीड करना है तो उसको डिवाइड करिए कि मंथली क्या टारगेट्स हैं आपके, वीकली क्या टारगेट्स हैं एंड पर डे क्या टारगेट है, उसको शॉर्ट एंड शॉर्ट डिवाइड कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको एक बर्डन नहीं आएगा और आप जैसे ही एक दिन का गोल अचीव करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होएगा और आपको बहुत हेल्प होएगी अपनी जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए। थर्ड थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है या जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनसे, जब भी आपकी प्रिपरेशन का टाइम है उससे स्पेस बना लीजिए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, बिकॉज एफर्ट्स आपको करने हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, बिकॉज यू हैव टू स्टडी 365 days 7 to 8 hours daily, so it is very important for you to be a confident and motivated and positive. Thank you so much. Hello everyone, my name is Mayank Mudgil. I have scored 187 rank in Civil Services Examination 2022. I would like to talk about GS1, especially the society part. I have scored 118 out of 250 marks in the GS1 paper. My strategy for society was very simple. I did not explicitly follow much of the content that is being taught, and I followed the sustainable developmental goals approach. So I made a list of all of the SDGs from 1 to 17, and I made a very natural flow in it, what they are, why I have the Paris Climate Agreement has selected them, what do we need to do, what is the goal that we need to achieve, what the government or at a global level has been done, what extra needs to be done, how are we going to achieve it, and what is the end goal of it. And then there will be certain suggestions, and then we can integrate the recommendations of committees if there is anything. For example, we have the Mudgal committee for Western Ghats and other things. So I made a very natural flow in the answers as well, and they were based on this pattern itself. I think this was one of the factors which has allowed me to score. Similarly, in the geography, I was very prudent in making the diagrams and the maps, which had to be coherent with the demand, the real demand of the question. And accordingly, in the history as well, I made it a point that wherever I could include a diagram, I did include it, and whatever the real demand of the question is, I just stick to that and do not move anywhere here or there or beat around the bush.
Similarly, I think I would like to add in the GS2 as well. My main source of recommendations and value addition was second ARC and certain committees and Supreme Court guidelines as well, certain famous cases as well. They are all part of the mainstream subjects and the syllabus that we do. So please read the second ARC in depth. I think most of the GS2 can be done from second ARC, keeping a simple source. Terming the international relations part, the diagrams are of utmost importance, and the recent agreements or the recent summits which have been made, we need to ensure that the current affairs are included in a very prudent manner so that we can pull some marks there. The social issues of the governance aspects, they are also prepared in the similar manner of society of GS1. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 139 आई है। आज मैं आपसे अपनी GS4 एथिक्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। आई गॉट 128 मार्क्स इन माय GS4 पेपर और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि फर्स्ट इज़ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। उसके लिए मैं ये फॉलो करती थी कि मैं केस स्टडीज़ पहले करती थी और पार्ट ए बाद में करती थी। सेकंड, मैंने बहुत सारे कोट्स इकट्ठा करे थे अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि जो भी टॉपिक आए उससे रेलेवेंट मैं कोई कोट अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर पाऊँ। इससे आपका आंसर थोड़ा और यूनिक बन जाता है। और उसके अलावा आप अगर किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आपके पास इतने एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि एटलीस्ट गिव 2 to 3 एग्जाम्पल्स इन ईच आंसर, so that your answers are not just factual or generic. उससे एक different edge मिलता है आपको. You can talk about serving civil servants as well as retired civil servants अगर कोई भी case study आपको पता है. एंड इसके लिए मैं टॉपर कॉपीज़ को भी ज़रूर रेफ़र करती थी. आप प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ पढ़ेंगे तो आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कैसे GS4 को बेटर प्रिपेयर करा जा सकता है. थैंक यू. Hello everyone, my name is Dr. Gurpreet Kaur and this year I have secured rank 870 and this was my 4th attempt in UPSC. Before telling my success mantra, I would like to tell my background. I am a dentist by profession. So the first problem I encountered in my journey was selecting an optional, because medical science as an optional was there in UPSC, but I could not choose it because being a dentist, the dental subjects were not there exclusively in that, and I need to learn MBBS subjects. So I took the idea of choosing a subject on which I had interest on, and therefore I chose history. And I would like to say to everyone that even if you have any interest in any subject which is not your graduation subject, still you can score good in UPSC. And the perfect example would be me. I scored 273 marks in optional, and according to history as a subject, this is a decent score. And I got this opportunity to be a part of civil service, and I'm looking forward to serve the country. And more tips I would say that in this attempt I lost courage and self-belief that I can clear UPSC, because it's been 4 years I was doing that, and I had a backup in my mind that I would continue dentistry. So I took this as a last attempt कि देखते हैं what I can do. And in a line I cleared prelims for the first time. In my previous 3 attempts I could not clear prelims, so the first time I sat for mains, I cleared it, and fortunately also I cleared the interview as well. So I'd like to thank my family for the support and the belief they had in me, even though the time I lost belief in myself that I could do. So this is my advice, that this journey is long one, but believe in yourself. Even the hurdles would be there, but believe in yourself. If I can do, everyone can do it. Thank you. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भरत जयप्रकाश मीना है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 85 सिक्योर की है। तो मैं आपसे यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था और लास्ट ईयर मुझे 146 मार्क्स मिले थे। तो इस बार मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं, 198 मार्क्स जो है मुझे मिले हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के जो इंटरव्यू है उसको लेके कहीं जो है
मिथ्स है, तो मैं सबसे पहला मिथ तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को लेकर होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जैसे हैं वैसा दिखने का प्रयास करें। यह कोशिश न करें कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको फेक दिखाने की कोशिश करें, उसका आपको मुझे लगता है नुकसान होगा। और अपने आंसर्स को बहुत शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, और जो पूछा जाए आप कोशिश करिए कि उसी को जो है बेटर तरीके से बोल पाए आप। 2 या 3 मिनट के अंदर कोशिश करें, 2 मिनट के अंदर आप जो है आंसर को कंक्लूड कर दें। और वैल्यू एडिशन करें, उसमें आंसर्स में डेटा फैक्ट अगर कुछ डाल सकते हैं तो वो ज़रूर डालें। और थैंक यू। Hello everyone, this is Aisha Fatima, rank 184 of UPSC CSE 2022. I have cleared my UPSC this year, and this was my 4th attempt. I could not clear prelims for last 3 attempts, and in fact for past 2 attempts I could not clear prelims by less than 1 marks. So my message to the students that are watching this is that don't lose your hopes. Be consistent, be disciplined, and be dedicated towards your goal. There will be failure, and failures are a part of learning process. Learn from your failures and be confident in the exam room, because if we say that unpredictability is the part of UPSC journey, so confidence is the key to crack that unpredictability. You have enough knowledge, but what is the paramount thing that is needed for the exam, whether it be prelims, mains or interview, is confidence that I feel. Apart from it, I would also like to acknowledge about my strategy towards Indian culture. So I prepared my Indian culture from the basic books of NCRTs like 11th and 12th books of fine arts. Apart from that, you have to also take examples of each and every word that you are reading from that book. Like if you are reading temples and you are reading examples, you are reading about the Nagara and the Dravida temple, so you need to acknowledge your answers with the facts of sun temples and also about the Dravida temple. You can use Meenakshi temples as an example of Dravida temple. So that will help you fetch you marks in the final examination, because examples is the thing that you are actively learning about the books that you are reading as well. So this was my key towards Indian culture. Thank you. Hi, I am Vrinder Kumar Das. I have gotten rank 854 in my last attempt this year. I am here to share my prelims strategy, as I cleared 4 prelims continuously. So for GS1, I think the best part is solving paper as much as you can solve, especially in the field of economics and politics, because questions are so close that you may misread them. Then secondly, for geography, I think reading the basic book is an important task, because most of the geography questions which are based on physical geography especially are coming directly from the NCRT's books. As far as location is concerned, you can use YouTube channels. Many coachings are providing the location based questions on daily basis. And for schemes, you have to be updated. However, 2 or 3 schemes may be asked in your prelims, so you have to you can rely on the coaching notes for them. For international relations, locations are important, and some dealings between countries, the bilateral deals, especially which come with some famous names, and some arms dealing that came with the special name like THAADs and S400. So you have to be focused on them, not specifically what detailing in them, but the name is important, and the country providing them and the country taking them is important. Where they are deployed is also important. For polity, Lakshmikant is enough. However, you can improve your basics by reading some judgments, especially related to fundamental rights, because some questions which have fundamental in nature are also asked by the UPSC. For example, especially related to Article 19 and Article 21, they are asking some interpretations. So you have to be thorough with the judgments. At least read judgment when they came in newspaper, for which you can follow some YouTube channels, and you can subscribe them on
social media platform also, so that you get the news whenever they came. For economics, newspaper is good. However, you have to strong with your basics. If you have strong basics, then you can do the questions of current affair also. Most of them are a good merger of the traditional knowledge, the basic knowledge of economics and current affair. So you have to be good with both the basics as well as the current affair. And economics is easier if you read newspaper, and if you have good basics, then you can solve the 10 to 12 question of economics easily. As similarly, you can score good in politics also in GS paper 1. Okay, and that's all from me. All the best for you. Thank you.